It's toss time in the middle. Thank you very much and welcome to match number 10 of the JK Super Seamen Red Premier League presented by Athwas. Sultans taking on Athwas India 11. It was toss time in the middle. The two captains and we got the three of the officials in the middle. And it's going to be Shubham Khujuria to lead his team today. And this is on your screen. The legendary. He's still going hard and strong. This lad is Shubham Khujuria on your screen right now. One brilliant opener who's batting in his own yard, in his wonderful style. He's known for his accuracy, execution, some of the brilliant shots. It's time for the joint pose in the middle. The two captains pose before the cameras. They're done with that. So we're done with the toss officially. Now we're going to look forward for the game here at Bakshi Stadium. Look at the two teams, Athwas India 11 and Sultan Warriors Baramulla. It's a league round-robin game, but a must-win game for both the teams. If Athwas prevail, that will cement their position to great extent. Sultans need to bounce back at any cost. There is no other option left. Let us see how things will unfold later on in today's game. We have three matches lined up for today. It's a busy day here at Bakshi Stadium. These are the highlights for you. Take a look.
Well, it's Athwas India 11 taking on Sultan Warriors Baramulla. It's a must-win game. Tight situation for both the teams. And let's see how they will operate in today's game. Nasir Lone has got the ball in his hand. He's going to operate. He's going to open the attack. It's going Nasir Lone to operate from Northern Pavilion, and on strike is going to be Wasim Kasur. There is a slip and a fly slip in place. Keeps him calm straight away. Keeps him quiet. Right on top of that one. Nice bounce and offer straight away. This is good indication. Surface is telling that there is going to be good bounce and carry. It's a bright sunshine out here at the Sunday. It's a nice morning. Pleasant atmosphere. And now it's going to get better with the passage of time. But the temperature is going to increase as the day goes on. As of now, Sultan Warriors in a tight situation. They need to win this one at any cost. It's at 24 degrees Celsius right now. That one flies over backward a point. And all the way for a maximum. 6 number 1 for Wasim Kasur there against the likes of Nasir Lone. Breaks free and makes the ball fly over backward a point. Take a look again. Just go through this one again. Watch this. Oh, there was outward movement, but that is a delightful cut shot and it flies over backward a point. Good start. Literally good start for Wasim Kasur. Job isn't cut out. There is going to be man at mid on. Man at short fine leg. Umar Nazir is there. Loads of experience bringing into this game. Shubham Khujuria is playing the captain, the skipper of Athwas India 11. But that shot, that was glorious. This time doesn't bother to keep it down. It wasn't close in field. And he pushes it away for a single that brings Asim on strike. 7 for none. In first over, I got Nazir in the com box. अस्सलाम वालेकुम, हार्दिक स्वागत सभी श्रोताओं का। दिन का पहला मुकाबला अथवास इंडिया 11 वर्सेस सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। हालांकि सुल्तान वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और आमंत्रित तौर पर ऐसे में जिक्र करें 7 रन बन चुके हैं। पहले ओवर की गेंदबाजी लोन नासिर गेंदबाजी कर रहे हैं, आसिम बशीर है सामने और वहां पर प्रयास था कैच का पर वो असफल रहा और निश्चित तौर पे आसिम बशीर और वसीम कासर पे काफ़ी कुछ निर्भर करेगा क्योंकि एक बेहतरीन शुरुआत देनी है। एक अच्छी शुरुआत, एक ठोस शुरुआत की आवश्यकता प्रारंभ में। सुल्तान की टीम आमंत्रित तौर पर बल्लेबाजी करती हुई अथवास इंडिया 11 के विरुद्ध इस पहली पारी में। यह पहला मुकाबला और कुल मिलाकर इस टूर्नामेंट का 10वां मुकाबला। लोन नासिर जिन्होंने शुरुआत की आज गेंदबाजी में और शुभम खुजूरिया आज के इस मुकाबले में खेल रहे हैं। जहाँ तक सवाल है अथवास इंडिया का, एक अच्छी शुरुआत और एक बेहतर शुरुआत चाहिए पर पावर प्ले काफी महत्वपूर्ण रहने वाला। लोन नासिर और इस बार अच्छा स्ट्रोक है, ऑफ साइड में गैप में गई है गेंद और सीधे सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए चौका एक और इस ओवर में। इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या दोहरे अंकों में पहुंचती हुई सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला 11 बगैर नुकसान के। Throw their bat at everything here. Take a look again. That was width on offer and asking for a hit, but that was 50-50. And he's lucky that one flies over slip cordon down to the third man. Now the man drops down to the third man boundary. There is going to be Tawfiq Azad in place to protect that boundary. 11 for none. Asim, he's a bit lucky there as he was put down earlier on by Qazi Junaid in the slip cordon. Good delivery again with the shot. He's off for a walk. Good running between the wickets. There is a direct hit on the other side. Are they going to refer it to the TV umpire? Umpire is having a word with Asim there, telling him that don't run on that danger portion. You have to elude it. You have to run outside that area. It's 11 for none after 5. It's 12 for none after the completion of over number 1. There was a chance in the very first over. You have to grab these opportunities and chances straight away. But there was an opportunity. That was a beautiful delivery. Take a look. This is their dugout. Sultan Warriors Baramulla. Talking about that important catch. It was important one. And you know that catch, it was Asim Bashir at stake. And would have been a huge blow to Sultan Warriors straight away. But that catch gone down. Qazi Junaid unable to hold on to the ball. And Umar Nazir is going to bowl in over number 2 from Southern Pavilion end. The game started from Northern Pavilion end today. In the very first we saw some of the outswing deliveries. The one that nearly had him, that was Asim Bashir, who was in all sorts of bother and trouble there. It troubled him. But he's lucky that he's still breathing, he's still alive out in the middle.
Is he going to carry on and continue with a Sam flow? 12 for the loss of no. 12 रन एक ओवर की गेंदबाजी में शुरुआत में 12 बने. अच्छी शुरुआत चाहिए. अच्छी खासी धूप इस समय खेली हुई है बख्शी स्टेडियम. जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास. सेकंड एडिशन 2025 10वां मुकाबला सुल्तान वर्सेस अथवास इंडिया 11. उमर नजीर आज उनका चयन हुआ है. लंबे ऊंचे कद के तेज गेंदबाज. पहली गेंद इस बार लेग स्टंप की छेद में ऑन साइड में खेलते हुए खूबसूरती के साथ वहां पर प्रयास था. डाइव लगाकर रोकने का प्रयास असफल और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. चौका मिलता हुआ यहां पर बल्लेबाज को और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या में वृद्धि. ऑफ स्टंप से बाहर चतुराई के साथ गैप में धकेला इस स्ट्रोक को. यहां कुछ रन जरूर मिले. चौका जरूर मिला सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम को और इस चौके की सहायता के साथ कुल रन संख्या 16 तक पहुंच चुकी है 1.1 ओवर की गेंदबाजी में. उमर नजीर आज पहला मुकाबला खेल रहे हैं इस प्रतियोगिता में अथवास इंडिया के लिए. आसिम बशीर सामने. इस पर पड़ने के बाद बाहर की तरफ सरकाव था. हल्का सा उछाल था गेंद में. आसिम बशीर स्ट्रोक के लिए जरूर गए थे पर वो गेंद की लाइन में ठीक तरीके से आ नहीं पाए. और यहाँ आत्मविश्वास जरूरी है, संयम जरूरी है. शुरुआती ओवर्स में थोड़ा सा सेट होना जरूरी है दोनों बल्लेबाजों के लिए. और 2 विस्फोटक बल्लेबाज सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के. आसिम बशीर के साथ वसीम काचरू. हालांकि आज टॉस हारे थे सुल्तान की टीम और उन्हें न्योता दिया गया अथवास इंडिया द्वारा पहले बल्लेबाजी के लिए. 16 1.2 के बाद 9 पे आसिम बशीर. उमर नजीर और गति उनके पास. एक और बेहतर गेंद. खूबसूरत, शानदार और सही दिशा और लंबाई के साथ. एक कड़ी परीक्षा हो गई इन ओवर्स में आसिम बशीर और वसीम काचरू की. वो पिछला मुकाबला सुल्तान ने हारा और यहाँ अवश्य जीत की तलाश में. वहीं पे अथवास की बात करें 2 में से 1 मुकाबला जीत करके अंक तालिका में 2 अंक उनके. ये तीसरा मुकाबला उनका. 10वां मुकाबला इस टूर्नामेंट का. 16 रन अब तक बने हैं. 9 पे हैं आसिम बशीर. हालांकि पिछले मुकाबले में ज्यादा खास कुछ कर नहीं पाए थे गुडविल के विरुद्ध, पर इस मैच में कोशिश जरूर होगी एक स्लिप के सारे. लगातार बड़े स्ट्रोक के लिए यहाँ आसिम बशीर प्रयास कर रहे हैं पर गेंद की लाइन में नहीं आ रहे हैं और शरीर से दूर खेलने का प्रयास. और उमर नजीर की बात करें उनके पास अच्छा खासा अनुभव है. एक लंबा अनुभव उनके पास और उस अनुभव का बेहतरीन प्रयोग और निश्चित तौर पे यहाँ जरूर दर्शेगा इस बल्लेबाजी के विरुद्ध. 2 के दुकान है बाकी. उमर नजीर अब तक 4 रन उन्हें खर्चे. मात्र पहली गेंद पर चौका. 3 लगातार डॉट गेंदे. दबाव आसिम बशीर पे. बड़े स्ट्रोक की तलाश. गेंद और बल्ले के बीच संघर्ष. खूबसूरत और बेहतरीन ये मैदान. ये लेग स्टंप की शेड में. हालांकि एक रन की तलाश में थे पर जैसे ही देखा गेंद सीधे फील्डर के पास. और इस ओवर में वो पहली गेंद पर चौका, उसके बाद से पूरी तरह से शांत रखा है आसिम बशीर को उमर नजीर ने. ये उनका पहला ओवर अथवास इंडिया के लिए. कुल मिलाकर दूसरा ओवर पारी का. और पहली पारी के आधार पर 170-180 अवश्य लक्ष्य इस विकेट पे. कोशिश जरूर होगी सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की एक बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया जाए अथवास के लिए. ये बेहतर स्ट्रोक है. गैप में गई है गेंद. पीछे फील्डर हैं और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था. सिंह 1 रन और खाते में. ओवर की समाप्ति 2 के बाद 17. सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला बगैर नुकसान के. Wasim and Asim. Experience is there and these two batters, they need to bat and prolong it. Longevity is what they require at the moment. Nazir 1 over none for 5. Economic over. Nasir Lone, he was a bit unlucky and little expensive. 17 of 2. Nazir, the Sam boy who picked up Rohit Sharma's wicket twice in his career. That is an achievement. There is a man at slip, there is a man at gully. No, there is a man at backward a point, that's Kavalpreet. Slip and a backward a point. That's Apish in the gap. That's gone wide of the man. That's gone between the slip fielder and the backward a point. There isn't gully fielder in place, would have been straight into the hands.
There is no gully in place. Asim is on to the other end. He's going to have a chat with Wasim Kasur for a while, telling him that stay calm, bat sensibly. It's a long way to go. Be sensible with the bat, as we're already one down in the tournament. We lost the first game badly yesterday. 18 without loss. Oh, look at that shot. The lap shot comes into play. Wasim Kasur and his trademark lap comes into play. That's 4. And with that boundary, there is addition to the tally. But look at that control from batter. Going deep in crease. Nearly imbalanced for a while. But gets 4 more runs. Take a look again. Look, he lost his balance for a while. But that is the trademark shot of Wasim Kasur, and he's in deep love with that area. We call that fine leg. And behind square, he's going to score plenty of runs. And this very zone, they're going to be 60-70% runs of Wasim Kasur are going to come from this area. And even if we talk of the outside off area, we have seen that 6 going over backward a point. That means again behind square on the offside. So he's loving these two portions, the behind square on the offside, that backward a point and the third man area when it comes to the backward of square and the fine leg. He's so strong there. He has that stance. He just shuffle across, then use that lap or the scoop at times. And we have seen that lap against the Nasir Lone, who's generating pace and making the ball climb. But this lad, he has that ability to adjust, adapt, then going with that kind of shot. That one is called the lap shot. It's 22 for none in over number 3. Bright sunshine, 24 degrees Celsius. And Ariel again, leading edge, it low was off. Down to the third man for 4. And this is going to frustrate bowler like Nasir Lone. He's keeping it tight. He's bowling in the right areas. He's trying to find an edge. He's got the man in slip cotton. He's got that backward a point there. Take a look again. Look, he was trying to go onside. And bat roll a little bit. Off the splice it flies. Eyeing onside. Trying to find that onside area, which is where the boundary is little short, and he's in deep love with this portion, and he loves to score on the onside. And that shot, he was trying to go against the flow of the ball. With the tide, he wanted to send it packing. 26 for none. Lucky boundary coming. 9 of the over. Look at that shot again. He was trying to go for that lap shot again. He's trying to fetch it. Not this time round. Somehow gets away with that one. A bit lucky. Once again, 27 for none. As Wasim Kasur, he's eyeing. He's loving that onside area. He's trying to find the gaps on onside. Twice in this over, I've seen that ball flying. One that gone over the fine leg. There he was in some control, but the next one where he was trying to go over mid-on or the mid-wicket portion, and his bat rolled a bit in his hand. Still getting 4 runs for that. There is a third man. Tawfiq Azad is asked to stay there. He's got fly slip. And that's gone fine of the man again. Will Tawfiq Azad cut it off? No way. That's going to beat the man at third man. He's going to get 4 for that. Deliberate one again. Look, there is a man in slip cotton and he's still going with that kind of a shot. He guided it and using the pace of the bowler just helps that one. And it runs down to the third man. It's 31 after 3 overs. Shade over 10 and over going on. Good start for Sultan Warriors here. Brisk, rapid. They're scoring runs. 31 for none after 3. Asim 15. Kasur 16 of 7 balls. The kind of breather they needed in the middle. There is a man out on the field for Wasim, and I think it's Tazim Tak having a word with both the openers. The message is, you have to stay there. Stay cool and calm. Long way to go. 17 overs are going to come. We got a good start. You just need to cash on. अच्छी शुरुआत, थोड़ा सा संयम के साथ बल्लेबाजी। आसिम बशीर ने 15 रन बनाए हैं 11 गेंदों से। वसीम कासुर 16 पे और अच्छी शुरुआत अब तक मिली है। 10.33 इस समय करंट रन रेट है, बहुत बढ़िया। विकेट सुरक्षित है।
उमर नज़ीर एक और ओवर लेकर के उससे पूर्व उन्होंने एक ओवर में 5 रन खर्चे हैं। लगातार वसीम काचरू बेहतर प्रयास करते हैं, 2 फील्डर बल्कि 3 खिलाड़ी उस गेंद के पीछे, पर एक खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों के पास समय था 2 रन लेने का, और 2 रन और खाते में जोड़ लिए। 31 से बढ़कर 33, 3.1 के बाद। पर ये संयम और आत्मविश्वास, ये क्षमता, ये कला, प्रतिभाशाली दोनों खिलाड़ी आसिम बशीर और उनके साथ वसीम काचरू। और प्रयास जरूर होगा एक बेहतर स्टार्ट दिया जाए, एक बेहतर शुरुआत, एक मजबूत आधारशिला प्रदान की जाए अपनी टीम को, क्योंकि आवश्यकता भी है अथवास इंडिया 11 की। अगर हम बात करें बल्लेबाजी की तो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है उनके बल्लेबाजी में, अच्छा खासा अनुभव है, और कोशिश ज़रूर उनके विरुद्ध एक बेहतर लक्ष्य खड़ा करने की यहाँ सुल्तान की टीम को। अच्छी गेंद थी, मिडल स्टंप पे पड़ने के बाद हल्का सा उछाल था, पर वहीं पास में खेल करके दौड़ पड़ी एक सिंगल के लिए। अच्छी रणनीति के तहत इस समय बल्लेबाजी हो रही है, और एक विकेट की तलाश अथवास इंडिया 11 को। शुरुआत लोन नासिर से और दूसरे छोर से उमर नज़ीर गेंदबाजी कर रहे हैं। चौथा ओवर अथवास इंडिया 11 की ओर से सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला, जो कि इस समय आमंत्रित तौर पर न्योता दिया गया है बल्लेबाजी का अथवास इंडिया द्वारा। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन प्रेजेंटेड बाय अथवास। 10वां मुकाबला 34-3.2 के बाद। पिछला मुकाबला वसीम काचरू ने एक बेहतरीन पारी खेली थी, हालांकि उस मैच में आसिम बशीर का बल्ला शांत जरूर रहा था, वो कुछ ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए थे। पर आज समय है और एक पर्याप्त अवसर है उनके पास अपने आप को एक बार फिर स्थापित करने का, इस मैच में एक बेहतरीन पारी खेलने का सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए। हाँ, इस बार थोड़ा सा हड़बड़ाहट की स्थिति थी आसिम बशीर के लिए। उमर नज़ीर एक अनुभवी गेंदबाज हैं, थोड़ा सा उनके विरुद्ध आपको संयम आत्मविश्वास दिखाना ज़रूरी है, सुरक्षित अंदाज के साथ बल्लेबाजी करनी ज़रूरी, क्योंकि इन परिस्थितियों में आप विकेट गंवाएं तो फिर एक दबाव आ जाएगा बल्लेबाजों पर, और वहीं पे अथवास की टीम एक विकेट की तलाश में, क्योंकि पावर प्ले में एक विकेट ज़रूर चाहिए, कोशिश में ज़रूर है। 2 तेज़ गेंदबाज, अनुभवी गेंदबाज लोन नासिर और उमर नज़ीर, जिनसे शुरुआत कराई आज अथवास के कप्तान ने गेंदबाजी में। आसिम के लिए इस बार आसिम को कनेक्शन मिल गया हवाई यात्रा पे, एक टिप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए एक और चौका मिलता हुआ। इस चौके के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई यह रन संख्या अब 34 से बढ़कर 38। उमर नज़ीर के बाद आसिम बशीर स्टंप्स को कवर किया, गेंद की लाइन में आए, खूबसूरती के साथ यहाँ 4 रन जरूर बटोरे अपने लिए और अपनी टीम के लिए। पावर प्ले ऑन है और पावर प्ले का बेहतर इस्तेमाल करना चाह रही है टीम सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला, और ये दोनों ओपनर्स अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है। एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता। 38 बगैर नुकसान के चौथा ओवर। खूबसूरत मैदान, अच्छी खासी मात्रा में दर्शक और धीरे धीरे से मैदान की ओर प्रवेश कर रहे हैं। हल्के मात्र चौथा ओवर इस पारी का, और एक अनुमान के तहत भारी मात्रा में दर्शक यहाँ उपलब्ध रह सकते हैं इस मैच का आनंद लेने के लिए, क्योंकि एक बड़ा मुकाबला है। सुल्तान दूसरा मुकाबला इस टूर्नामेंट में खेल रही है। पहले मुकाबले में रॉयल गुडविल से हार का सामना करना पड़ा था, वहीं पे अथवास ने 2 में से 1 मुकाबला जीता जरूर है। स्ट्रोक अच्छा था, पर सीधे फील्डर के पास कोई मौका नहीं, किसी भी खिलाड़ी के पास यहाँ पे लगातार दबाव बना करके रखा है इस ओवर की इन गेंदों में, क्योंकि मात्र 7 रन अभी तक आए हैं। और जो जिक्र कर रहे हैं कि एक अच्छी शुरुआत चाहिए, वो अब तक शुरुआत मिली जरूर है। 38 रन बने हैं 3.5 ओवर की गेंदबाजी में अथवास इंडिया 11 के सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। अंतिम गेंद का आना बाकी, उमर नज़ीर। अच्छी गेंद, बेहतर गेंद। अंतिम समय में तिरछे बल्ले के साथ को गाइड करना चाहते थे, पर सफलता नहीं मिली और गेंद गई विकेट कीपर के पास। ओवर की समाप्ति, 4 समाप्त, सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला 38 बगैर नुकसान के। Asim, he's facing little trouble at the moment against the likes of Umar Nazir. Got a boundary, that aerial one or the edgish one, that flown all the way, and it's 38 with a loss. "38 banana after 4 overs. We're going to win over number 5. And this is a JK Super Cement Red Premier League presented by Athwas. Match number 10. Must-win game for both the teams. And Sultan Warriors, they have no other option. They're left with no other choice. You have to win this to stay
alive. They do have 2 more games to come, but this win will definitely mean that they have something to play in the remaining 2 games, and this is going to boost their confidence. It's going to be spin into the attack. 4 overs from pace, and it was there were quite a few chances. One that was in the slip cordon that gone down of there was Qazi Junaid at that time. He was unable to latch on to the ball, and Abid Mushtaq for the first time will roll his wrist over the ball. He has that experience. He's got the knack of picking wickets. He has impressed everyone in domestic circuit. Now today, what kind of approach, how he will adjust, what are going to be the deliveries, and how he will operate against the likes of Wasim Kasur and Asim Bashir. Wicketkeeper up to the stumps. Flight on offer. That's a big shot. There is a man at long off, and he's in trouble. He's taken. Easily taken. And Wasim Kasur has to go. Nasir loaned the fielder there. And look at the celebration from Abid Mushtaq, telling something, passing on comments. As Kasur is gone, Kasur lost his shape, trying to go through the line. So did he. He does in the same style, but finds the man at long off. He's taken there. Take a look again. Flight on offer. He decided to take him on. And Abid Mushtaq has the last laugh. First one down for Sultan Warriors. Got the elevation, not the distance. And look at the celebration. And look at that frustration. He's taking it out on the ball as he gone for runs. And that shot, I still remember that gone over backward a point. That was glorious. And that was so nice of the batter Wasim Kasur. And that is telling the story. How he celebrated and taking out that anger on the ball. And with that, it's 1 down, Sultan Warriors. That means number 3 is going to come out, and he walks out to middle. Take a look. There is a good crowd in good numbers. Wasim Kasur, I think it was a bit early, but Wasim Kasur knows that he has to score runs. You can't keep this lad quite for too much time. And Kanaya Wadwan comes in at number 3. Yesterday that was nightmare shouting, and today he has an opportunity once again. What he's going to do in today's game, Kanaya Wadwan. That was Yash Garg at his very own best, getting rid of Kanaya in his very first ever. That was his 13th one. It's over number 5 we are in. Kanaya has to produce something special. All want to see Kanaya to flourish and establish his knock here. Abid Mushtaq to operate. First ball goes onto the back foot again. Bat and pad close together. Deep down the crease. Kanaya. He's just trying to warm up a bit. He need to warm up his muscles. Open up a bit. 38 for 1. That's a good looking shot. Cut away. Can't beat the man. Can't find the gap on offside. Kanaya Wadwan, wicketkeeper batter. Yesterday the plans didn't go right. What they were expecting, they expected yesterday, that didn't go their way, as they lost the momentum a couple of times in yesterday game. Abid Mushtaq drawn the first blood in form of Wasim Kasur, who was taking the game away. Directed needed. He would have been on his way. A chance gone begging. Kavalpreet unable to hit the bullseye. The captain, Shubham Khajuria, he's got that experience. He's going to rotate his fielders and the bowlers to perfection today. But one thing is lacking, that is still missing the agility. Kavalpreet, there was an opportunity to catch Kanaya short of his crease as he opened at his account. Asim has to take care of his wicket. He need to put premium on his wicket here, as Abid has removed his partner earlier on. That one, that was a good delivery to welcome Asim Bashir. Abid bowled that one. He fired into the right hand. Somehow he digs it out to mid off. And this is how you need to carry on and continue. You need singles and doubles. Rotation is important. That's a good shot there. And keeps it away. Keeps it away to offside. Just a single there. 41 for the loss of 1 after 5 overs. They're going shade over 8 and over. Lost to the wicket of Wasim Kasur.
who played some of the quality shots. Two shots I really loved. One that was over backward a point, that cut shot. The next one that lap over fine leg. And take a look again. Let me take you through the Sultan Warriors. Asim Bashir, Banu, then Kanaya, Nadeem Bhatt, Nadeem Dar, Umays, Salman, Shubham, Tehzeem, Wasim Bashir and Wasim Katsur. Athwas India 11, Abid Mushtaq, Dikshant Kundal, Kavalpreet, Law Nasir, Yabar Hassan, Qazi Junaid, Shubham Singh Pundir, Tawfiq Azad, Shubham Khujuria, the skipper, Mudassir Abdullah and Aman Nazir. Some of the big names in their side, Athwas India 11. If we talk about these records, they have huge records and records among the public and people. They know them very well, looking at their records in domestic circuit, in local cricket. Wasim Kasur has 25k runs under his belt. Shubham Khujuria has played domestic level cricket, and some of the guys played alongside him. They played quality cricket. They have been playing over the past couple of years, serving their respective areas, respective clubs and associations. It's 41 for 1 after 5 overs. Tawfiq Azad, he's got the ball in his hand for the first time. In first 2 games, he wasn't used it. And today, captain will use his skill, and you know that sometimes he's unplayable at times. He's got that instinct, and people call that mystery at times. But let's see what he has in store, with what kind of variety he's going to bowl in today's game. That remains to be seen. 41 for 1 after 5 overs. Change in the bowling, change in voices in the com box. धन्यवाद। और 5 ओवर की गेंदबाजी में 41 रन बने हैं। छठे की शुरुआत कन्हैया वाधवान 2-4 गेंदों से आसिम बशीर 20 और तौफीक आजाद का इस्तेमाल। पहली गेंद पर प्रहार, फील्डर तैनात पीछे उमर नजीर, गेंद को फील्ड कर लिया गया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र से, पर दोनों बल्लेबाजों के पास समय था सिंगल लेने का। 1 रन और खाते में 42 रन संख्या पहुंच चुकी है। अगर हम इस मैच की बात करें, ये पहली पारी 10वां मुकाबला है इस प्रतियोगिता का। अथवास इंडिया 11 की टीम गेंदबाजी कर रही है। टॉस जीतने के बाद आमंत्रित किया था सुल्तान को बल्लेबाजी के लिए। वसीम काचरू का विकेट मिल चुका है। इस बार फिर हवा में उड़ी है गेंद, उस ओर है खिलाड़ी और ये सीधा वहां पर कैच छोटा। एक अवसर आया था, एक आसान सा कैच, हालांकि संतुलित हुए थे और गेंद हाथ में आने के बाद छिटकी काजी जुनैद से ये कैच छोटा। दूसरा कैच काजी जुनैद से। हर आसिम बशीर की विकेट मिल सकती थी यहां पर अथवास को। ये देख लीजिए, काफी देर हवा में रहने के बाद गेंद संतुलित जरूर, पर अंत में कैच छोटा। तौफीक आजाद ने संभवतः आते ही एक विकेट सफलतापूर्वक दिला दी थी, पर वो मिली नहीं क्योंकि कैच छोटा। इस बार खमियाजा भुगता। अगली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक स्टैंड्स में, 6 मिल जाएंगे यार। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, छक्का अर्जित करते हैं आसिम बशीर और टीम सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। रन संख्या 48, 1 विकेट के नुकसान पे। छठे ओवर की गेंदबाजी तौफीक आजाद के विरुद्ध। आसिम बशीर की ये क्षमता है, वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं। पिछली गेंद पर उनको जीवनदान मिला, पर अगली गेंद को स्टैंड्स में जा भेजा 6 रनों के लिए। दबाव तौफीक आजाद पे, क्योंकि उनकी पहली गेंद पर वहां काजी जुनैद ने कैच छोड़ा। और कितना महंगा पड़ सकता है ये देखने वाली बात हो गई। इस बार फिर एक और खूबसूरत स्ट्रोक और एक बार फिर गेंद स्टेडियम से बाहर 6 रनों के लिए। 2 गेंदों से 2 छक्के आसिम बशीर के विरुद्ध, तौफीक आजाद के विरुद्ध आसिम बशीर द्वारा। और क्या कमाल की बल्लेबाजी। निश्चित तौर पे एक दबाव बनाने का प्रयास अब तौफीक आजाद पे। एक युवा गेंदबाज हैं, बेहतरीन गेंदबाज हैं, पर पिछली गेंद पर, पहली गेंद पर उनके विरुद्ध कैच छूटा। फिर अगली 2 गेंदों से 2 छक्के, 50 पूरे होते हुए। और यहां पर दौड़ पड़े 1 रन के लिए। डायरेक्ट हिट स्टंप्स पे लगता तो नजदीकी मामला हो सकता था। भाग्य ने साथ दिया, सुरक्षित पहुंच गए दोनों बल्लेबाज आसिम बशीर और कन्हैया वाधवान। आसिम 33 पे और कन्हैया वाधवान अब सामने हो गए 3 पे। 5 गेंदों से 55 पे 1। तौफीक आजाद ने 5 गेंदों से अभी तक 14 रन खर्चे हैं। और इस ओवर में 2 छक्के 2 सिंगल आ चुके हैं। 14 रन 5 गेंदों से। इस बार डाउन द ट्रैक कन्हैया वाधवान लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की ओर खेला। पीछे फील्डर हैं, और जब तक गेंद को फील्ड करते पलटकर दूसरे रन के लिए उमर नजीर के पास गेंद गई थी। 2 रन और ओवर से आए
16 6 समाप्त सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला 57 पे 1. Good field by Nazir. What could have been a boundary, and he limits the scoring down to 2. He does well, keeps it down to brace. It was a genuine boundary, but Nazir with that effort, those 2 sixes coming against the likes of Tawfiq Azad. He was earlier on put down by Qazi Junaid. Easy chance gone down. Should have been taken, but he dropped a dolly, and later on we saw complete assault in an over. 2 sixes coming, and both were slog sweeps. He can slog the ball, he has that ability. Power in his arms. Technique and class is there. The star of Tungmurg, 57 for 1 after 6. So power play done. Good score. Brilliant start. Kanaya, the other batter, is batting around Asim Bashir. Good delivery, batter line. He's got that bounce and offer. Look at that, shouldering his arms there. As it bounced, all of a sudden it kicked off the surface. Good bounce and carry as of now. Next one, he shortened the length a little bit. And you have to mix it up. You have to do these things. Once you go with a quicker one, once you purchase, or once you have that extra bounce and offer, the next one, you have to mix it up. Keep the batter guessing, checking, again and again. Once you do this, and you can keep the batter under check, you can test his temperament, and there is a chance. And Kanaya is gone. He lures him into that drive, and he's sent packing. Abid Mushtaq has his second one. What a bowler he has been. What a finding he has been. He's a fine talent coming from Badarwa, Doda area, and he's picked up a wicket here. What a boy he has been. Abid Mushtaq. He's hitting the charts here. And he bowled really well against the likes of Royal. And in the second game against the likes of Spectrum Kings. He's there to deliver for his team. Abid Mushtaq once again. Take a look again. He draws him forward. Oh, look at this one. Wicketkeeper is there. Is not going to allow him to be back to the safety of crease. Is he Yaba Hassan? And he whiffed up the bails in no time. Sent him packing. So it's wicket number 2 down. Another low scoring game for Kanaya Vadwan. Kanaya is gone. Kanaya knows how to play in a longer format on a red ball. And there is a huge difference between red and white ball. And that brings the newcomer in at number 4 for Sultan Warriors. I think it's Banu, looks like. Yesterday scored 70 plus, invaluable, and that was excellent, brilliant. Some of the humongous hits crowd witnessed it here of the bat of Banu yesterday here. 2 for 58, halfway mark in over number 7. 7th over underway. Abid Mushtaq has picked up second one, and look at the attendance. They are sitting still. Some of them concerned. Hand is on their face. Concerned. Sadness is visible. Deep thinking going on. What needs to be done? How to recover? Who's going to provide them that stability? They require that at the moment. In a desperate need of a partnership. Sultan Warriors again. Banu walks in at number 4. Abid Mushtaq is certainly going to pose a threat. There is a slip in, and Yabar is up to the stumpers. Man at backward a point. First ball trying to go for that scoop shot, trying to improvise straight away. Shout for LBW and is turned down. Now he's asking the man at backward up scare. Go close to the fine leg area. Get close to that portion. Flight and offer, but this lad gets to the pitch of the ball, driven straight. He has that caliber, the class he possesses, the skill set. He's got that rare skill set. Abid Mushtaq, flighted again. He's trying to flight the ball, lures him into the drive again. 2 overs, 2 for 4. And look at his figures. Impressive from Abid Mushtaq. Brilliant spell continues from Abid
from one end. Now it's up to the captain how he's going to use. He has to use and capitalize cautiously. You have the one who's troubling the batters. Abid has that knack of picking wickets, drawn Kanaya forward, and prior to this, getting rid of Wasim Kachru, telling him that here is a kind of a lollipop for you. Try to hit hard, and he found the man at long off. Simply, it is the technique of a bowler. When you have the better of the batter, that means you do have something special. Sometimes you trouble the batter, or either batter makes a mistake. We have seen those things. But look at this lad. It's the beauty of Abid. Was kept things tight, stingy, and miser with the ball. Just 4 runs in 2 overs and picking up 2 invaluable wickets and 2 big guns sandpacking. Tawfiq, he was a bit unlucky in his first over, gone for 16. He's brought back to the attack again. Asim Bashir is going to take charge now, betting on 34 of 23 balls. Batter can't take chances. Wicketkeeper is up to the stumps. That's going to keep batter under check. That will keep the batter in a situation which we call the cagey one. He has to understand, he has to read it properly out of the hand, rub the surface. He has to pick the ball first. Then he can operate with that big shot. It's marking the fresh guard. Balwinder Kumar Soni says cover in, get ready. 2 for 59. Bright sunshine. 24 degrees Celsius. Hot and humid climate once again in this part of the world. It's hot up steep. The beautiful thing about Banu, he's going to take little time and he's going to drop his wrist when required, when there is extra bounce and offer. He's going to tap it, he's going to keep it away. Little uppish. Roll back. And now he's off the mark using 5 balls. When you lose 2 wickets, or when you lose a batter like Kanaya, who's got that experience, but is denied by some quality bowling, that's going to bring other batters under pressure. And that's going to keep them on their toes, telling them that you can't take chances for granted. You have to be at your best. You have to find the ball properly. Is it a hit-me delivery? And you have to read it properly. You can't misread anything. You can't take undue risk as you're already 2 down. 60 for 2, we're into the 8th over. No problem with the scorecard at the moment. It's going, it's okay, it's fine. They need to take care of wickets. Gentle press. Sensible cricket. Scamper through. Good running between the wickets. Pitch a single. Where it was very difficult to find. But the batter, the way he uses the gentle press onto it, that is good. That is smart from batter. 8 overs done. It's 2 for 62. बासठ 2 विकेट पे 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। आसिम बशीर और बहानू एक पार्टनरशिप बिल्ड करने का प्रयास, अभी तक सफलता ज़रूर मिली है, पर इस साझेदारी को और बड़ा करना होगा, क्योंकि यहाँ साझेदारी की आवश्यकता सुल्तान की टीम को। तौफीक आज़ाद 2 ओवर की अब तक गेंदबाजी, आबिद मुश्ताक ने भी अच्छी गेंदबाजी, और दोनों विकेट आबिद मुश्ताक के खाते में, और उनकी खूबसूरती पूरी तरह से अंकुश लगा के रखा है। बल्लेबाजों को अवसर ज़्यादा नहीं दिए हैं। ललचाया ज़रूर वसीम काचरू का विकेट, उसके बाद कन्हैया वानवान को चलता किया। एक बेहतर गेंदबाजी अभी तक हुई है अथवास इंडिया के इस गेंदबाज द्वारा। मुदस्सिर अब्दुल्ला एक और परिवर्तन गेंदबाजी में, और देखना होगा मुदस्सिर अब्दुल्ला भानों के लिए किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे। तेज गेंदबाज, एक बार फिर स्पिन आक्रमण दोनों छोर से हटा लिया गया है, और अब आबिद मुश्ताक के स्थान पर मुदस्सिर का इस्तेमाल। पहली गेंद खूबसूरती के साथ उसको गेंद की पिच तक पहुंचते हुए खेला जरूर। एक सिंगल मिलेगा यहाँ पर। अच्छी रणनीति, सिंगल डबल से आप स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं और खराब गेंद का वेट कर रहे हैं, तो एक अच्छी मानसिकता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा आक्रामक शैली से बल्लेबाजी की आवश्यकता नहीं है। अब विकेट सुरक्षित रखें, 10-12 ओवर तक ले जाएं, फिर अंतिम 4-5 ओवर में आप अच्छी तरीके से बेहतर बल्लेबाजी करें, कुछ विस्फोटक अंदाज अपना सकते हैं, क्योंकि जब आपके हाथ में विकेट होंगे तो फिर उस प्रकार का दबाव नहीं होगा आप पे।
पर अथवास की टीम एक विकेट की तलाश में यहां से और कोशिश भी कि एक और विकेट मिले। ओ कमाल की फील्डिंग, बेहतर फील्डिंग। आबिद मुश्ताक बहुत ही बेहतरीन फील्डर हैं और उसके अलावा अन्य खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो अथवास ने अब तक बेहतर गेंदबाजी की है। हालांकि 64 रन जरूर बने हैं 7.68 प्रति ओवर के हिसाब से, 2 विकेट। पर जो क्षमता है दो बल्लेबाजों की, उसके अनुकूल अभी तक बल्लेबाजी करने का अवसर नहीं दिया है। कि कुछ बड़े स्ट्रोक जरूर आसिम बशीर ने खेले, वसीम काचुर ने खेले, पर जब से उनका विकेट गया है वसीम काचुर और कन्हैया का, तब से एक बार फिर परिस्थितियों को भांपा है, जांचा है गेंदबाजों ने और स्थिति को कंट्रोल में रखने का हर संभव प्रयास है समय गेंदबाजों का। 9 ओवर की गेंदबाजी। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास। 10वां मुकाबला और इसके बाद एक और मुकाबला 3 बजे और फिर दिन रात्रि के मुकाबले में आपके साथ 7 बजे जुड़ेंगे। आज के दिन की अगर हम बात करें तो हर पल हर सुख क्रिकेट देखने को मिलेगा। जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक, यूट्यूब और उसके अलावा रेड एफएम जेके यूट्यूब के माध्यम से ये लाइव प्रसारण बख्शी स्टेडियम श्रीनगर से आप तक पहुंच रहा है। 9वें की गेंदबाजी मुदस्सिर अब्दुल्ला का इस्तेमाल किया गया है और अच्छा ओवर अभी तक घटा है। मात्र 3 रन खर्चे हैं 4 गेंदों से। अच्छी गेंदबाजी, सही दिशा और लंबाई के साथ, नियंत्रण अपनी लाइन और लेंथ पे इस गेंदबाज द्वारा। मुदस्सिर का चयन किया गया है आज के इस मुकाबले में अथवास इंडिया के लिए और उन्होंने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है। इस बार तिरछे बल्ले के साथ गाइड किया, पर पीछे फील्डर तैनात, एक सिंगल और मिल जाएगा। इस ओवर में अब तक 4 सिंगल आए हैं 5 गेंदों से। अच्छा ओवर अथवास इंडिया के दृष्टिकोण से, क्योंकि सही दिशा और लंबाई के साथ, सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी की है मुदस्सिर ने इस ओवर में। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला का दूसरा मुकाबला इस प्रतियोगिता में रेड प्रीमियर लीग, जेके सुपर सीवर रेड प्रीमियर लीग की अगर बात करें, लॉन्ग ऑन की ओर खेले हैं और दोनों बल्लेबाजों के पास समय था कुछ रन बटोरने का और अच्छी बल्लेबाजी के चलते ओवर से कुल मिलाकर 6 रन आए। 9 समाप्त, 92 6, आसिम बशीर 38 और सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला 68 पे 2 9 के बाद। In search of a partnership, Bano and has got Asim in the middle. 38 of 27. Katsur left early today, coming up with a few of the cracking shots, when he lost his balance all of a sudden. And we also saw the back of Kanhaiya Wadhwan, another low scoring game for Kanhaiya Wadhwan, as he was stumped by Yavar Hassan, the bowling of Abid Mushtaq. We're into the 10th over, Tawfiq in his 3rd over. And Asim Bashir this time. There is a man at long off. Is he in play? That's gone over the head of a man. Nazir at long off. Wide-ish long off area for a maximum. Welcome to Tawfiq Azad with a lusty blow of the very first ball. Look at that. Knelt down on one knee. Gorgeous and glorious. Umar Nazir. Is he going to have a word? No way. As he handed over the ball to Tawfiq Azad. Fielder having a word with Tawfiq, trying to ease up his nerves. This is a good move. Suggesting him something. Do this in such a way that we can keep him under check. That's a good shot through the line this time. Anything loose, anything short, Asim will pounce on that. He's going to latch on it. The way he leant on a ball that gone over wide-ish longer for a maximum. Wicketkeeper up to the stumps. They're going to pinch these singles. They are so good between the wickets. They are good at running. They will fetch these singles with ease. 76, we're into the 10th over. Good attendance on one side. That one
Man at mid-wicket is going to end up as a mute spectator. He can't bring that one down as it's gone like a helicopter and all the way for a maximum. And it's going all the way. And take a look again. Tawfiq is feeling the heat and pressure. He has his man earlier on, but that was put down. He had him earlier on, but that catch gone down. Should have been taken. That drop chance is costing them heavily at the moment. It's causing a damage now. That's through the line. No chance for anyone. Straight like an arrow. Through the line. It's 50 off. The star of Tangmarg moves to 55 now. And Tawfiq Azad. He's become predictable here. He's flighting the ball. He's trying to lure him into the big shot. But Asim Bashir, he's getting to the pitch of the ball. This time through the line with the tide. Gets 4 again. And runs are flowing. Runs are coming. It's like bread and butter for Asim Bashir as he's going after Tawfiq Azad. Carnage continues. Now he decided to keep it away. There is a shot for LBW and up goes the finger. Tawfiq Azad finally something to cheer. And Asim Bashir departs on 55-32 balls. And Tawfiq removed the danger man. Was trying to take him away. He had him earlier on. Now he gets him in the form of LBW. He's given out leg before wicket. And it's going to be time for the drinks as signalled by Balwindra Kumar Soni. Asim Bashir. It looks like that he's unhappy. It hardly matters. Are you happy? I run to you. You have to leave. It's given out LBW. It's wicket number 3 down in the form of Asim Bashir, who scored 55 invaluable runs. Put down ones. And is given out as LBW. Can we have the replay? We can go through this one again. It's a left arm spinner, Tawfiq Azad, who finally removed Asim. It was going on to hit the leg stump. So up goes the finger. Good call nonetheless. And that means they are 3 down, 86. At crucial juncture when they needed a breakthrough. And it's that young lad who comes up with a breakthrough, comes up with a wicket and much needed one. And Asim, he decided to keep that one away. Believe me, he was just trying to go defensive. It was the same kind of a delivery where he used his power and those fireworks to launch it big and bigger. But this time round he decided to go with a defensive shot. It reminds me of once upon a time Afridi did it against the likes of Harbhajan Singh, and that only defensive shot cost him his wicket. And look at that one. He's given out LBW. 10 overs done, halfway mark, halfway stage. The first quarter of 10 overs, the first phase of play is done. The next phase of 10 overs is going to come as Sultans are reduced to 86 for 3 now. 10 overs remaining. Where they going to finish at the end of over number 20? They needed a kind of breather, getting in the form of Asim, who was scoring at a brisk pace, a rapid, as he smashed the bowlers. Couple of hits. He smoked to the ball in air, spanked through the line. 3 for 86 after 10 overs. Thanks to the sponsor of JK Sports Time, Anthem Sports India Fashion Feast, the Shining Star Pump or amateur multi-brand H&A complete kits wear near Netipura, Srinagar, Valley Fresh Cold Chain, Hamdan, Hurricanes, the importers and the exporters. We are going to be in over number 11, and just to Bukhara is something special, and someone who's kind by heart was something special. Halfway mark, 10th over done, and that was the successful over. He's gone for 38, but he's got the golden wicket, a wicket that cost us an arm and a leg.
So you can understand that how costly it is, how invaluable it is. That's a costlier one, or the costliest one, I must say. It's going to be captain to operate. It's over to you, Nazir. धन्यवाद मुनव्वर। पहला 10 ओवर का सत्र समाप्त। शुभम शर्मा है नए बल्लेबाज बानु पानिया के साथ। तौफीक आजाद 3 में 38, 1 विकेट। शुभम खजूरिया शुरुआत करेंगे गेंदबाजी में पहली गेंद पर, और कैच छोटा पर क्या चोटिल हुए हैं वहां पर, यह देखना होगा। फील्डर कंवलप्रीत को गेंद जरूर लगी है और चोटिल जरूर हुए हैं कंवलप्रीत की अगर बात करें। हालांकि काफी बड़ा स्ट्रोक था, ये हवाई यात्रा पे भेजा जरूर था। उस ओवर उन्होंने कैच लपकने का प्रयास किया पर वो असफल रहा, पर चोटिल जरूर हुए हैं। इस समय जो रन संख्या वो 86 पे 3। 11वें की शुरुआत शुभम खजूरिया का आज चयन हुआ है टीम में। हालांकि आकिब नबी आज टीम का हिस्सा नहीं है, अब्दुल समद और उमरान मलिक टीम का हिस्सा नहीं है। हालांकि पिछले 2 मुकाबले अब्दुल समद ने खेले थे, पर आज के मुकाबले में वो टीम के साथ नहीं है, टीम का हिस्सा नहीं है। वहीं पे आकिब नबी भी टीम का हिस्सा नहीं है। शुभम खजूरिया का चयन हुआ है। उसके अलावा उमर नजीर आज टीम में खेल रहे हैं। ये कंवलप्रीत चोटिल जरूर हुए, क्या वो फील्ड से बाहर चले जाएंगे अथवा नहीं, ये देखना होगा। पर शुभम खजूरिया एक अनुभवी और बेहतरीन क्रिकेटर हैं। यह गेंदबाजी का अवसर मिला है इस पारी में, क्योंकि अथवास इंडिया 11 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। आमंत्रित किया सुल्तान की टीम को बल्लेबाजी के लिए वसीम काचुर और आसिम बशीर ने शुरुआत की। वसीम काचुर ने कुछ बेहतरीन स्ट्रोक लगाए, पर एक ललचाती हुई गेंद पर अपना विकेट थमा बैठे थे। आबिद मुश्ताक की गेंद पे नासिर लोन को हर 1 रन और 10.1 ओवर की गेंदबाजी 87, 3 विकेट पे। पिछली गेंद पर सिंगल आया और इस गेंद पर 1 रन और जोड़ लिया दोनों बल्लेबाजों ने, तो 88 तक रन संख्या पहुंच गई। 11वें ओवर की गेंदबाजी पर सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम इस समय बेहतर स्थिति में, क्योंकि अभी भी 7 विकेट सुरक्षित हैं। 88 पे 3। एक और अच्छी गेंद नीचे रहती है शुभम की, और शुभम सही दिशा और लंबाई के साथ ज्यादा गति का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 2-3 कदम का बॉलिंग रन ऑफ स्टंप पे तिरछे आड़े बल्ले के साथ उसको दिशा दे दी, पर सीधे वहां पर एक बार फिर गेंद आबिद मुश्ताक के पास। थोड़ा सा रनगति पे विराम जरूर लगा है आसिम बशीर का विकेट गिरने के बाद। बानू और शुभम शर्मा बीच मैदान में। ऑफ स्टंप पर आते गेंद ऑन साइड में खेलते हुए एक सिंगल पूरा कर लिया। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, एक सिंगल और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 88 पे 3 विकेट अभी तक गंवाए हैं सुल्तान की टीम ने। पहला मुकाबला गुडविल से हारे, दूसरा मुकाबला अथवास के साथ। और वहीं पे अथवास की बात करें, पहला मुकाबला गुडविल से हारे, दूसरा मुकाबला उन्होंने स्पेक्ट्रम से जीता। ये उनका तीसरा मुकाबला है। 2 अंक उनके जरूर हैं। सुल्तान की टीम 2 अंक तलाश रही है। ऐसे में 11 ओवर समाप्त, 89 पे 3। शुभम शर्मा 1, बानू पोनिया 9 पे 15 गेंदों से, और खजूरिया के पहले ओवर से 3 कसी हुई गेंदबाजी। क्या फायदे, अनुशासन दिखा, वो पैनापन दिखा, और नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी गेंदबाजी की दिशा और लंबाई में। Catching has been a problem with the fielding unit as of now. From ball 1 until over number 11, we have seen a couple of catches gone down, Nazir. And that has been the problem with the fielders. They need to understand it, that catches win matches, catches are important. And fielders have a role to play in every match, in each and every game. They put down Asim. Asim scored 50. They put down Banu. He's still in the middle. He's breathing. He's alive. And yesterday he played that breathtaking knock. One swashbuckling knock. Mudassir Abdullah
ball 1 over none for 6 is brought back into the attack, and captain used an over from Northern Pavilion end. Kavalpreet got injured. He caught an injury while taking that. Panu and Shubham Sharma in the middle. Now it's up to the two lads. Oh, take a look. This is the beautiful view. Helicopter is flying. What a moment. Herijonga, it's just gone past. 3 for 90 in over number 12. Yesterday Sultans were unable to defend. 179. We'll have to wait and watch. I think it's a fair delivery. No problem. He gets away with it. Mudassir Abdullah trying to break free, unable to find gap on offside. Trying to latch on to the ball. That's what you require at the moment. You can rotate. That's important thing. You have to rotate. Finding a single or a double isn't a big thing here. With bigger boundaries on offer, you have the spaces, you have the blanks to fill with ones and twos. Mudassir has got a good run up, tall lanky lad. And that one, that's going to be in the air. Will he get to the ball? Can he make it to the ball? It's Umar Nazir unable to make it to the ball in time. But he did really well. He was expecting that Nasir will come in and stop the ball. Umar Nazir saved boundary earlier on. And that was a genuine four where he put in that dive to protect the ball and to prevent the ball from going over the boundary cushion there. He did really well, and showing that he's still fit, he's okay and he's fine. He can carry on and continue his cricket. This time trying to drive the ball, bit lucky up the cue end, fumble again. Little lazy. There is a laziness among quite a few on the field. Some of the catches gone down. You need to convert half chances when you drop catches like the one we saw within the 30 yard of Asim Bashir. How come you put brakes on the scoring rate and batters gonna flourish, they're gonna cash on, and they did that in style. And one of them, it was Asim Bashir, who played that remarkable knock of 55, and Kasur got a start and thrown his start and wicket away, unable to convert that start into a substantial one, as it was expected that he will go a long way. Guided nicely in the gap, down to the backward, a point boundary for 4. Great presence of mind once again. You have to say, I have to use the word to perfection. Look at the execution. Eyes on the ball, very watchful. Precision and accuracy is there. Oh, guided nicely. Dropped his wrist and guided it properly through the gap, through that corridor. And ball hitting that JK Super Cement advertising hoarding. 97. Raise it on the board. Not this time. He was trying to drop his wrist again. He did that. Unable to find the gap. Eyeing that gap. Either side of the man would have been 4 again. And that would have been 100 on the board. 8 overs to come. They are 97 with 8 overs to come. Yesterday, they missed the trick at the fag end. But today, they have 7 of the batters in kitty. The batters need to take chances. Somebody need to put feet on accelerator. Somebody has to do that. And one among the two has to put feet on accelerator and has to decide that it's time. It's the high time to find the top tier. As crowd is in good numbers here. Good attendance on that portion. Where we have the central tunnel and the amenity block 4. We have a great attendance on that portion. There is a huge crowd in. It's 24 degrees Celsius and they're trying to cover themselves. And there is something that's going to keep them okay and fine. That will keep them hydrated. And they're going to feel that sigh of relief under the tent. Batter wanted a single, won't get. Now the temperature is going to increase. It was 27 early morning. Now it's 27. It was 24 early morning. Now this is going to increase with the passage of time. Let's see
what it will touch as the day goes on. And Shubham is firing it into the left-hander. He has that knowledge. And he knows what kind of posture the batter possesses, how he's operating, what he's trying to do at the moment. It's 98 for 3. We're into the 13th over. भानु और शुभम शर्मा ये जोड़ी है बीच मैदान में और यहाँ पर आउट करार दिया गया और किनारा और सीधे विकेट कीपर के पास शुभम खजूरिया को पहली सफलता अपने दूसरे ही ओवर में और भानु को किया चलता 14 बनाए 19 गेंदों से और 98 पे ये चौथा विकेट गंवाया है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला ने। ऐसे समय में जब रनगति को उछाल देने की आवश्यकता थी और वहां शुभम खजूरिया ने चलता किया भानु को। एक बार फिर अच्छी गेंदबाजी शुभम खजूरिया और ये किनारा और सीधे विकेट कीपर के पास कोई गलती नहीं की और इस प्रकार से शुभम खजूरिया को मिलने वाली ये पहली सफलता अपने पहले ही मुकाबले में अथवास इंडिया 11 के लिए। 98 पे 4, 12.3, 7.84 करंट रन रेट। शुभम शर्मा 5 पे। पिछले मुकाबले में भी अच्छी शुरुआत मिली थी पर अंतिम जो 10 ओवर्स थे वहां से बेहतर तरीके से उस पारी को सुल्तान की टीम फिनिश नहीं कर पाई जिसके चलते 10-20 रन जरूर वहां कर अंतिम ओवर्स में कम बटोरे थे जिसके चलते वो मुकाबला हारना पड़ा। और कहीं ना कहीं यहां अब कोशिश जरूर होगी कि एक अच्छा लक्ष्य खड़ा करें क्योंकि सामने एक बेहतरीन टीम अगर अथवास इंडिया 11 की बात करें। नदीम डार आए हैं नए बल्लेबाज बीच मैदान में शुभम शर्मा के साथ। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला 98 4 विकेट पे। 13वां ओवर 3 गेंदें इस ओवर की और फिर 45 गेंदें अभी भी शेष हैं सुल्तान के पास। एक बार फिर वो कहानी वो पिछले मुकाबले की। नदीम डार सामने। अब देखना होगा नदीम डार क्या कुछ प्रभाव छोड़ पाएंगे अपनी बल्लेबाजी से। अच्छा खासा अनुभव है और पिछले कुछ मुकाबलों में अगर देखें तो नदीम डार कोई खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। क्या आवश्यकता है इन परिस्थितियों में। बड़े स्तर पे आप खेल रहे हैं, बड़े स्तर की टीम के साथ आप खेल रहे हैं तो फिर आपको बेहतर प्रदर्शन करना होगा। अलग प्रकार की मानसिकता इस बल्लेबाज की। किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे ये देखने वाली बात होगी क्योंकि आपके पास ओवर्स काफी पड़े और यहां से आपको अपनी टीम को अतिरिक्त दबाव से निकालना होगा क्योंकि जो इस समय ये क्रूशियल समय है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए जहां अथवास के गेंदबाज चाहेंगे कि रनगति को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, रोका जाए और वहीं पे सुल्तान की टीम को कुछ बेहतर प्रदर्शन करना होगा। रन जरूर मिल जाएगा नदीम डार को चहलकदमी करते हुए। ये पहला रन उनके खाते में और कुल योग सुल्तान का 99 पे 4। 13वां ओवर शुभम खजूरिया गेंदबाजी विश्लेषण देख लीजिए। 1.5 ओवर 5 रन 1 विकेट। अनुशासन वो पैना पर और सबसे महत्वपूर्ण बात नियंत्रण दिखा उनकी गेंदबाजी में। अवसर नहीं दिए ज्यादा बल्लेबाजों को। अनुभव दर्शाता है आपके स्तर के खिलाड़ी हैं और इतना ज्यादा अनुभव उनके पास है और उस अनुभव का बेहतरीन प्रयोग करते हैं। एक और विकेट बोल्ड कर दिया यहां पर और इस प्रकार से दूसरा विकेट एक ही ओवर में शुभम खजूरिया को दिखा दिया, दर्शा दिया वो किस क्षमता के खिलाड़ी हैं, वो किस कैलिबर के खिलाड़ी हैं। एक ओवर में 2 विकेट। रिप्ले के माध्यम से एक बार फिर इस विकेट को देख लीजिए। कमाल की गेंदबाजी इस अनुभवी गेंदबाज शुभम खजूरिया द्वारा बिल्कुल भी वहां पर पड़ नहीं पाए। एक और विकेट शुभम खजूरिया को 2 ओवर में मात्र 5 रन 2 विकेट 99 पे 5 सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। Who's this Shubham Sharma? I can't understand. Over the past couple of days I've seen him. He failed miserably and badly. Over the past couple of... Why he's in the side? For what? Is he a bowler or a batter? Well, I can't understand. It's a brand fade from management too. You have to take dig at it. You have to introspect and look deep into this one. And for what he's in the side? Is he a batter or a bowler? Well, even yesterday, I still remember that miserable outing in South, and today, even yesterday here at Bakshi Stadium, and once again here, that brings Nadeem in at number 7. Stage was set, all of a sudden 2 wickets falling, and things are back
into the tricky situation again and these are going to be the tricky circumstances for Sultan Warriors. They're back into the tatters in shallow waters again. And their unpredictability, they're unpredictable at times. Look, it was 98 for 3. It's 99 for the loss of 5. In a space of 1, they are 2 down. Just a single coming and they lost 2 of the wickets. Mudassir Abdullah is given the ball again. Captain has to go big today. He has to play that captain's knock, an inning that will script to the history for his team. It was in and a bounce. It's a good ploy from Mudassir Abdullah. He has to go with those slow ones and he has to opt for it, and he has to do that. Try to mix it up, take pace off and keep the ball low. Don't make it rise too much. When you take the pace up, let it roll up the surface. And look at that, there was an and a bounce. When it stays low, it's hard for the batter to pick and read it. It's 100 up for Sultan Warriors in 14th over. 36 balls are going to come. After this over, Nadeem joins Nadeem Dar. Wraps him on pad. That one curl back into the right hand a bit. He misread it completely. He cuts him into half. Having no idea or an option, as he misread it completely. Gets beaten. The good thing about the batter, he's still breathing. He's okay, he's fine there. And he's getting ready to face the next one. Another good thing for Athwas India 11 is Kawalpreet is fielding right now. He's back on the field. Good shot this time. Will he beat the man? And Umar is so quick. He's quickly onto the ball. You got to beat the man Umar Nazir there on edge of the circle, and there isn't anyone patrolling behind Umar Nazir. And he offered that one, which was a drivable one, which was asking to drive. And he obliged with that drive there. Drivable length. 101 for 5. 14th over we are in. Sultan's losing Banu in the other over. The very next moment they lost the wicket of Shubham Sharma. And captain of Athwas India 11 picking up invaluable 2. And both the batters sent packing. And Banu was important one. And the one who has provided Sultan Warriors that stability over the past couple of years in this part of the world is coming here. It has been 2 or more than 2 years. He has been here and playing for Sultan Warriors whenever they require his likes, his experience. He is there to stand up. And he stood up a couple of times. 101 for 5. Denied again. Quality bowling. Captain and his partner is Captain Captive Mood. They are jailed at the moment. They are caged at the moment. There is no freebie on offer. That's smart cricket from Mudassir and other bowlers. They're keeping the 2 batters under check. They tighten at the nose. They tighten at the screws. Putting brakes on. Drawing up singles. Denying any freebie. That is going to frustrate the batters. That's going to tease and annoy. They need to do something extraordinary. They have to break free. And these shots will come into play. Once you trouble the batters, they have to try something new, which may be at times unconventional. It's 102 after 14. At one stage, they were running away with the scorecard from driver's seat to tatters. That is the story which is unfolding here at Bakshi Stadium. Must-win game for both the teams. For Sultans, it's not just must. It means blood and spirit for Sultan Warriors if they are to stay alive and comfortable in the event in the tournament. While some of the beloved listeners and beloved viewers and even Nasir
thinks that it won't be easy. This is the stiff competition ahead. Well, no doubt about that. I just agree with your statement and I second to your opinion. The way they gone down yesterday, and that just sum up. It won't be easy. Oh, look at that one. It's a beauty of a delivery. Abid Mushtaq picked up one more. Oh, what's going on? All of a sudden, it's a collapse in the middle. A middle order collapsed. He has broken the back. He's now just trying to run through the middle order. Nadeem Dar, the captain, is beaten all enders up. Take a look again. We shall go through this one. Oh, beautifully bowled. It changed a bit. Drift was there. And look at the celebration. Abid Mushtaq, the one-man army. Third one for Abid Mushtaq. Look, he's telling him. He has only one thing to do. He would press it. And I use the drift in air. I got the drift of the surface too. And getting rid of Nadeem Dar. The skipper, the captain, is sent packing. I think it's Umasetu at number 8. Why they're using this lad deep down the batting order? It was better to go with... We saw that Shubham Sharma coming in. It was better to send this lad at that position, at that number, so that he could understand what kind of a surface it is. And I don't understand why he's in the side. Well, precisely talking about, he may be a star, no doubt about that. But it has been a lean patch. And you know, you have only one opportunity. You don't have too many opportunities. It is in a longer format where you have 7 or 8 games. You have just 3 games or 4 games. You have to be at your best. Coming up with the best 11, the possible best 11. You can't take chances for granted in an event like this where you have just 4 games and you're 1 down already in the tournament. You have just 3 games and where you need to win all the 3 to cement your position when it comes to the qualification scenario. And you can't lay on others that if A wins, B beats C, just like that. That's a good shot. Dig out nicely, straight through the line into the side screen for 4. Quality shot of the bat of Umasetu. And Umas opened his account with a boundary. Look at their dugout. Now they are looking concerned. They're feeling the certain amount of heat at the moment. The pressure is there in the dugout. The temperature 27 degrees. Oh, take a look again. How it traveled past. Good start. And a good shot to open the account. Umasetu. He has to bat now. Now or never. It's do or die for this lad. Others fail it. He has to stand tall here. Will be interesting how he will bat against the likes of Abid, who's gone for just 8 and picking up 3 of the important wickets of Sultan Warriors. Has broken the back. Removed Kasur. Removed Kanaya. And now the latest one, the latest casualty in form of captain. He's there to press it. Another good shot straight down the ground. Are they going to look for the second? They're going to content with 1. Straight away, we can say that he has shown some application to some extent. And if you are here to explain it briefly or in brief or in detail, this lad deserves the praise for that. Just 2 shots and all by copybook from cricketing book. And talking about Shubham Sharma. And that one, that's in the air. Will he be caught? He is caught indeed. It's wicket number 7 down. What he was trying to do, Nadeem, but a kind of a brain-fade moment, knowing we're 6 down. And it's given to the 7th one to walk away and play that aerial shot. And Kavalpreet says, not this time. Not this time. I'm here to take it. Good gobble. Good take in the end. And Abid Mushtaq has his 4th one. He bowled really well in that game. If you remember that game against the likes of Royals, he was really good there. And against Spectrum Kings. And Sultans are in deep trouble again. What's going on and how it happened? You and we were part of it. And we witnessed it, how things changed drastically from 98. From 98 for 3 to 107 for 7. And we know what happened and how it unfolded over the past couple of overs. And it's been Abid Mushtaq who wreaked havoc with the ball. Dismantle at the middle order now, just trying to run through. He ran through already.
into the tail. Salman is in at number 9 and Sultan's at 107. That's what cricket is all about. The game of glorious uncertainties. But some of the wrong shot selection and some of the good deliveries and the great ones to get rid of those removed the batters. But for what that Shubham Sharma is in the side? Well, I fail to understand. They have to introspect. They have to look into it deep. As a team, as a unit who got that kind of fan base, you can't commit mistakes each and every day. Every day is not a Sunday. You have to learn the basics. You have to improve a bit. Wanted a single, is denied. He's got one more over to come. And he's got one ball remaining in this over. Now another question is, who's going to bat through the 20 overs? They're running short of resources. And one more important thing that is going to compound it. This lad has got one more over. How they're going to keep this lad away from picking wickets? He's so quick there, and this is going to be overthrows, and this isn't good. And that will hurt. That is going to cost them few runs here. And these things they need to understand. Why I use the word, you can't get overcautious. You can't afford that time and again. That's the reason. Because these are the important moments in the game. It costed them a brace to end the over number 15. 5 overs to go, 109. When they were having 8 overs in Kitty, I thought they will finish around, they were 98. I thought they will finish around 180, like that. Now look how things gone past. The remaining 3 overs from 13 till 15, we have seen 3 overs, 13, 14 and the 15. And 3 overs yielding just 11. And it cost them how many wickets? 4 of the batters gone back to pavilion in a space of 11 runs. Not just drastic. It's bizarre. And sometimes you have to give credit to the bowling unit, the way they bowled. But the shot selection is another concern. That also is in an equation there. How they batted, how they played each and every ball. With bigger boundaries here. Just 5 overs to go. And Umesh has to bat like a champion. He has to roar like a lion here. Is he going to do that? Is he going to roar? Is he going to bring that crowd to life again? That remains to be seen. It's over to 5 ओवर का खेल, 2 ओवर उमर नज़ीर के शेष, लोन नासिर के 2 ओवर, आबिद मुश्ताक का 1 ओवर, उसके अलावा नई दीगर गेंदबाजों के पास कुछ ओवर्स बचे हैं, पर यहाँ मात्र 5 ओवर. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 7 विकेट प्राप्त कर लिए अथवास ने. 16वें की शुरुआत उमर नज़ीर दूसरे स्पेल में 2 में 12 उन्होंने खर्चे हैं उमेश के लिए. और उमेश अब कोशिश ज़रूर करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये दायित्व निभाना है उमेश और सलमान को. पूरे 20 ओवर खेल करके अगर आप 160-70 तक पहुँच जाते हैं तो फिर कहानी में कोई नया रंग देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उमेश में वो क्षमता है और सलमान को सहयोग करना होगा. पर जब गेंदबाजी इस प्रकार की हो, जब इस प्रकार की गेंदबाजी आपके सामने, तो फिर एक चुनौती ज़रूर रहती है. सलमान 2 पे 110 पे 7, 15.1 उमर नज़ीर अभी तक पहले विकेट की तलाश में, पर 13 रन मात्र उन्होंने खर्चे हैं. सामने की ओर नॉन स्ट्राइकिंग छोटे स्टंप्स के साथ गेंद टकराई, पर रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने. 1 रन और मिल जाएगा. नेल्सन स्कोरबोर्ड पे 111, 1 पे 7, 15.2 के बाद 111. सलमान और उमेश 6 पे 3 के दूसरे, पर उनकी क्षमता, वो एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं और एक बेहतरीन फिनिशर भी हैं. पर यहाँ दबाव ज़रूर होगा, क्योंकि 7 विकेट सुल्तान की टीम गंवा चुके हैं अथवास इंडिया के विरुद्ध. जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास. 10वां मुकाबला पहली पारी, भारी मात्रा में दर्शक जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक, जेके स्पोर्ट्स टाइम यूट्यूब, रेड एफएम जेके के माध्यम से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है बख्शी स्टेडियम से. दिन का पहला मुकाबला, और इस पहले मुकाबले की पहली पारी में आमंत्रित तौर पर न्योता दिया गया था सुल्तान की टीम को बल्लेबाजी के लिए. शुरुआत बेहतर, पर यहाँ खराब परिस्थितियां. फुल टॉस हवा में है, यहाँ विकेट मिल सकता है. उमर नज़ीर को मिल गई सफलता पहले. उमेश को वापस भेजा, 6 बनाए 4 गेंदों से 111 पे 8वां विकेट 15.3 के बाद. लगातार संकट की स्थिति, 98 पे 3 और 111 पे 8, 5 विकेट 13 रनों के भीतर गंवाए हैं सुल्तान ने. तो ये कहानी है इस अगले सत्र की.
अब तक। और अथवास ने दूसरे सत्र में बहुत ही बेहतरीन वापसी की है। वो पहला सत्र बहुत बढ़िया रहा था 10 ओवर का, और मात्र 2 ही विकेट गंवाए थे। फिर उसके बाद से ये लाजवाब वापसी, कमाल की गेंदबाजी, 111 पे 8, 15.3 के बाद सलमान 3 पे आखिरी आउट होने वाले बल्लेबाज उमैस इत्तू 6 रन बनाए। उमर नजीर को पहली सफलता, आबिद मुश्ताक ने 4, उसके अलावा शुभम खजूरिया को 2 विकेट मिले हैं और 1 विकेट तौफीक आजाद को भी समर्थ थे। तो ये अब तक का लेखा जोखा अगर बात करें इस पहली पारी की, 111 पे 8, 2 विकेट सुरक्षित है। निराश वो खीमा और डग आउट नजर आ रहा है, निराश चेहरे नजर आ रहे हैं, और अवश्य है क्योंकि उस प्रकार का प्रदर्शन रहा नहीं। पिछले मुकाबले में भी रॉयल गुडविल के विरुद्ध लड़ाई जरूर लड़ी, पर अंततः मुकाबला हारना पड़ा। फिर दूसरे मैच में जब न्योता दिया गया बल्लेबाजी का अथवास इंडिया द्वारा सुल्तान की टीम को, 10 ओवर बहुत बेहतर चले थे, शानदार बल्लेबाजी भी थी, लेकिन उसके बाद अगला सत्र काफी गंभीर रहा, पूरी तरह से हावी रही गेंदबाजी अथवास इंडिया 11 की। 111 पे 8, 2 विकेट सुरक्षित। तजीम टाक आए हैं नए बल्लेबाज, हालांकि एक बेहतरीन गेंदबाज है और पिछले मुकाबले में भी उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। और यहाँ बल्लेबाजी का अवसर मिला है इस मैच में और अथवास इंडिया के विरुद्ध, और खासकर उमर नजीर जिनके पास अच्छी खासी गति है, एक लंबा अनुभव है उनके पास। ताजीम किस प्रकार से उनके विरुद्ध कुछ रन बटोर पाएंगे अपनी टीम सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए, ये देखना होगा। उमर नजीर ताजीम के लिए एक बार फिर लगभग फुल टॉस, गति थोड़ा परिवर्तन जरूर किया था, सामने की ओर बॉलर की दिशा में खेले। 111 पे 8, सुल्तान की टीम दबाव में पूरी तरह से। 15.4 ओवर की गेंदबाजी, तीसरा ओवर उमर नजीर का, हालांकि 1 ओवर अभी भी इस ओवर के बाद उनका शेष है। 2 ओवर लोन नासिर के, 1 आबिद मुश्ताक का। मुश्किल चुनौती यहां पर सुल्तान के लिए। ताजीम सामने, हाँ इस बार खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद पैड से टकराने के बाद ऑफ साइड में चली गई, फील्ड हुई, पर एक बार फिर रन नहीं मिलेगा। पूरी तरह से दबाव इस समय साफ झलकता हुआ बल्लेबाजों पर, क्योंकि आपके जो प्रमुख हथियार हैं वो उतना ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए। हालांकि वसीम काचू ने कुछ बेहतरीन पारी खेली, उसके अलावा आसिम बशीर ने अर्धशतक के पारे 55 रन बनाए, और उसके अलावा किसी भी बल्लेबाज ने वो टिक करके खेलने का प्रयास किया नहीं, वो सफल भी नहीं हुए। जिसमें नदीम डार, नदीम भट्ट, शुभम शर्मा, बानो, सभी ने निराश किया आज सुल्तान की टीम को। एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतर गेंद, किनारा, विकेट कीपर के पास, एक और विकेट उमर नजीर के नाम। इस ओवर में ये दूसरी सफलता उमर नजीर को, और 9वां विकेट 111 पे सुल्तान की टीम ने गंवा दिया है। निश्चित तौर पे अब जल्द से जल्द इस पारी को समेटने का प्रयास होगा गेंदबाजों का, वो कोशिश होगी अथवास इंडिया के गेंदबाजों की कि जल्द से जल्द इस पारी को समेटा जाए। Collapsed, miserable outing, and Nazir, I often talk about it. Some of the beloved listeners and viewers, and there are going to be argues coming in. They often talk about it. Why you take dig? Sometimes you take harsh dig. But let me explain it. With your cool heart, think over it. With your cool brain, hold on with cool head on your shoulders. Try to understand and introspect. I think this is the heart of Arab Qataria, who's holding it right now, who's shouldering that burden. And nobody else can take the responsibility like this when your team is going down time and again, not learning the lesson. Every day going down like this. I think they need to overcome all these things. Have a deep emotion and think over it time and again. You're playing on a big platform. You are playing here where everyone is watching you. Look, there are different apps, there are different papers, there are different outlets who are carrying the news and the message, those videos, those pictures, and you are featuring on different posters, on different websites. So what are you doing? You got enough. We call that you need that exposure, and we call that one is the exposure, the other one is that you want to get exposed.
And there is enough that will tell the world that you are here, you are delivering your level best, you are the best in the business. You got something where you can attract the sponsors, the clubs that will ask you, that will invite you, that be the part of our club. So you're getting a desired appreciation, call ups. And talking about this team, when you play cricket like this isn't good, and this could be the end of inning number one. It is indeed, and they are bundled out on 111, and they set 112 for team Athwas India 11. They finished their campaign 111. And talking about the team, plop show again, collapsed again. Sultan batters need to learn a lesson. After the completion of the game, sit together with the management, talk about it, what's going wrong, where it went wrong, and how it changed the complexion of the game. I think Arif Khatara need to introspect once again. You can't use your money like this. It is called that you are not working on it cautiously. You are just burning your money, you are burning your time. You can't afford this time and again. You have to work on it and think over it again and again. Look what kind of shots they played. And there is one who's I just gone through the Cricket Heroes. I saw that it was written as spearhead. That Shubham Sharma, for what he's in the side. You have too many players in the valley. For what you are bringing other guys here? You have the talent in the valley, just give it a try. At least try them with the locals here. Let them provide an opportunity, a platform where they can excel, where they get that exposure, sharing that dressing room with some of the big names. We have Shubham Kujure playing today's game, so they will learn the basics. What kind of a batter Kujure is, how he bowled under certain circumstances. But bringing in the boys from different parts of the country, that doesn't mean it will help you. You have to work on the local talent here, at the raw talent here. I think that's the important thing. Expose our own talent. Let others come in and show that appreciation, and they show that we need these guys in the longer format, in the shorter format across the country, so that they get that invitation. And you have to explore that what we have. You have to scout out the talent here. Take a look. Take a look again. There is only partnership that looked threatening. That was 38 between Asim Bashir and Wasim Kazur, and that needless shot from Kazur that ended his good run. And that's it we have for you from the inning number one. We shall be back with the chase in a while. Till then, assalamu alaikum and fi amanillah.
Assalamu alaikum. Afternoon, everyone. Out there, it's 112 to get from 20 overs. Should be easy one for the batting unit as they are looking forward to a paltry chase of 112 from their allotted 20 overs. And Wasim Bashir has got the ball again in his hand. The Pahalgam Express was expensive yesterday. He gone for plenty of runs yesterday, conceded more than 50 and picked up 2 wickets at the fag end when it was all over for Sultan Warriors Baramulla. What he's going to do today, he need to take care of his front foot. He's having some issues there. He's unable to keep that foot behind the crease. There needs to be something behind the crease. And the Shubham Singh Pundir, I think it is. Shubham Singh Pundir in the middle. And he's got Yabar Hassan, the other batter. In the meantime, the 2 batters in the middle, ball 1 coming up. Straight away, he's off the mark, in control, keeps it away, kept it out onto the onside. And he's underway with a single. It's 1 for none. Shubham opened his account. They are chasing a paltry 112. Today they have the proper opening pair in the middle. They have Yavar Hassan and they got the Shubham. Let's see how these two will try and how it will pan out. In coming overs, we shall come to know. In the meantime, Wasim has got the ball. Yabar will take strike. धन्यवाद। स्वागत आप सभी का दूसरी पारी में। एक गेंद फेंकी जा चुकी है। वसीम बशीर ने शुरुआत की है ओवर की और यावर हसन सामने एक बगैर नुकसान के 112 का टारगेट मिला है। ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी। खेला जरूर रहा कि पीछे खिलाड़ी मिड ऑफ पे उनने गेंद को फील्ड कर लिया। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। अथवास इंडिया 11 112 चाहिए जीत के लिए सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के विरुद्ध। वो पहले ओवर में 1 रन अभी तक बना है। मात्र 2 गेंदें अभी तक हुई हैं। यावर हसन और शुभम खजूरिया ने शुरुआत की है इस मैच में। जहां तक प्रारंभिक जोड़ी का सवाल है अथवास इंडिया के लिए, वसीम बशीर तेज गेंदबाज। अगली गेंद इस बार फिर ऑफ साइड में ड्राइव किया पर फील्डर तैनात सीधे उनके पास। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। रन संख्या भी टिकी हुई। 1 पे 3 गेंदें फेंकी जा चुकी है। शुरुआत में 5.69 ये रिक्वायर्ड रन रेट है। अथवास इंडिया की टीम बड़ी सहजता के साथ चाहेगी कि शुरुआत बेहतर मिले। उतना बड़ा लक्ष्य है नहीं। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल, पर क्या यहाँ कुछ बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिलेगा? क्या कुछ बेहतर शुरुआत देखने को मिलेगी? और कोशिश भी होगी कि शुरुआती ओवर्स में विकेट तलाशें यहाँ गेंदबाज। बेहतरीन स्ट्रोक गैप में और गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए यह पहला चौका यावर हसन के बल्ले से निकलता हुआ और 4 के साथ उनका खाता खुला। रन संख्या 5 पे पहुंची अथवास इंडिया 11 की। वसीम बशीर जो कि लंबे ऊंचे कद के तेज तरीन गेंदबाज हैं। ऑफ स्टंप पर स्ट्रोक खेलने के लिए अवसर मिला जरूर था और गैप में धकेला खूबसूरती के साथ यावर हसन ने। एक बेहतरीन अनुभवी खिलाड़ी चौका बटोरा वसीम बशीर के विरुद्ध। 5 बगैर नुकसान के पहला ओवर। और ऐसे में यावर हसन 4 पे, शुभम खजूरिया 1 पे। 7.50 करंट रन रेट और 5.53 रिक्वायर्ड रन रेट। अच्छी खासी धूप खिली हुई ऐतिहासिक बख्शी स्टेडियम। 10वां मुकाबला दूसरी पारी। 112 का लक्ष्य सामने अथवास इंडिया 11 के लिए। अच्छी गेंद थी पर सम्मान दिया। स्टंप्स को कवर करते बैट और पैड मिला करके बल्ले के बीचों बीच लिया। ये आत्मविश्वास दर्शाता है, ये क्षमता है आपकी, ये काबिलियत है बल्लेबाज यावर हसन की। और जानते इन परिस्थिति में किसी भी अतिरिक्त दबाव की आवश्यकता नहीं है, कोई अतिरिक्त जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है। 112 तक पहुंचना है तो ऐसे में एक ठोस शुरुआत चाहिए, एक बेहतर शुरुआत चाहिए और एक सतर्क शुरुआत में इन 2 बल्लेबाजों द्वारा 5 बगैर नुकसान के अंतिम गेंद का आना बाकी। गेंदबाजी का दायित्व वसीम बशीर के पास। वसीम बशीर आखिरी गेंद लेकर के यावर हसन के लिए और फिर बेहतर तरीके से सम्मान दिया। रक्षात्मक रूप से बगैर किसी रन के अंतिम गेंद पर रन नहीं आया। ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति अथवास इंडिया 111 के जवाब में 5 बगैर नुकसान के। Tight with this. Yavar Hassan and he's got Shubham Khajuria, the captain, and Pundir is also playing in today's match. The other day we saw some of the cracking shots of the bat of Shubham Singh Pundir. He's in the lineup today. But right now we got the Yasir Hassan who's betting on 4 of 5 and Shubham Khajuria is on to 1. Khajuria is having experience of next level and Yavar Hassan is a bright, shining
corrector from South Kashmir, and he was part of stateside last season, expecting he's gonna find his place again, and it's going to be Salman to operate. So we're going to be in over number 2, 5 for none. After the completion of over number 1, this is going to be over number 2, second over about to start. It's going to be Salman to start the fresh over. A man in slip cordon, Wasim Katsur, is keeping stumps. There is short fine like captain is there. There is a man at backward, a point, straightish point, extra cover, and man up, mid on. And this is the field set. Good shot. And he's not going to run for those 4 of them. Through that, a gap of offside. There was a man at point, and there was a man at cover. Between point and cover, in no time it races away for a magnificent boundary. A great shot, cleverly done. Right on top of that one, rises to the occasion with a classy 4 as Salman. There was nothing wrong with the ball, but the class of Shubham Khajuria is evident, is visible to the naked eye. The way he stood his ground and tall. Once again, but this time won't get that gap. He was eyeing either side of Asim Bashir there. Anything either side would have easily gone past. 9 for none. Chasing 112. They're 103 more runs behind. This is just the second over we are in. Man at slip, man at a fly slip, then backward a point. Tazim is there. Salman, who's operating at the moment. Shubham Khajuria, solid block. Gentle block. No run taken in Yawar Hassan. Asim is looking at his bat. Is it Asim or Banu? I think it's Banu who's checking Yawar Hassan's bat and going back to his position at mid-on. I think he's loving that bat. That's why he was trying to check that. Good delivery again. Keeps it to mid-on. The 9 for none, chasing 112. Looks like they will bat accordingly here. They won't take any undue risk, as they know they want to finish the game. Yesterday we saw that opening partnership won the game for the real Sultan Samarbuk. That is not just going to boost their confidence, and that will improve their net run rate. This time, beautifully bowled again. Excellent ball from Salman against the legs of Shubham Khajuria. Drawn him into that drive and beats him on that outside edge. Good delivery. Good move from Salman. And Tazim is going to be another key factor in today's game. Let's see how things will unfold in coming overs. That's in the gap. He will keep the strike. 2 done. 10 for none. Sultan Warriors, they're feeling this certain amount of pressure, that heat at the moment, as they were clueless, speechless at times. They started reckless, then all of a sudden they lost the momentum. It was a flop show from middle order and down the order. Bowlers wrapped up the tail in no time. From 98 for 3 to 111. That is the story that just unfolded in inning number 1, where they lost the momentum. It was 98 where they lost the wicket number 4, and from 98 there was no comeback. Nobody could stand his ground, and there was nobody who was trying to stay grounded and bat properly. They were bundled out badly today. Couple of good balls, few wrong shots cost them heavily, badly. Look at that shot on drive. He's not gonna run for those. Again, beautiful shot comes into play on drive, and look at that shot. He was damn sure, he was pretty sure that this one is gonna fetch him 4.
Look at that shot. Wow. Extension of arms. And those wrists coming into play. Typical wristy subcontinental batter. That was so nice. Glorious, gorgeous, agile and adorable too. With that wonderful on drive. Shubham Kajuria. He just admired that shot. 14 for none. This time wraps him on pad and umpire said it was clearly going over the line. Misread it completely. Takes a body blow. Looks in little trouble. It was ouch. As it hits him above the knee roll. Around that portion which is full of muscles. He's pressing that area. An exercise is going on. 14 for none. As we are in over number 3. In the meantime, Kajuria is getting ready on to 10. He's into the double figures. Wasim Bashir in search of wicket number 1. In search of a breakthrough. Tap it away. Showing that composure. Not in any sort of urgency here. They know 112 isn't a big deal. Had Sultanas finished it around 150, 160 would have been a good contest. Would have been a game in balance. It would have been evenly poised in counter and contest. Would have been a contest to watch out. But they lost the plot. There was a collapse. And not just a collapse. They lost the momentum. It was a brand fade. Again, a glorious and so nice. Timer to perfection. This time, Yawar Hassan. Look at that. So nice. Elegant and elegance. Asim Bashir can't stop the ball. It's gone wide of him. Cover try comes into play. Wonderful shot. So nice. Delighted and delicious. Delicate too. Shubham is still having issues. Now he's trying to understand. I tried to go with that pull shot. Very lost to the way. Wasim lost his run up. He's going to reload again. He's going back to the top of his bowling mark. He need to reload and re-bowl that one again. It's 9 of the over already. 19 for none. 19 रन अब तक बन चुका है अथवास इंडिया 11 के. अच्छी बल्लेबाजी और गैप में गेंद को धकेलने में सफल जरूर हुए हैं. बेहतरीन तरीके से गैप का इस्तेमाल किया है. वो टाइमिंग और प्लेसमेंट बढ़िया रही है अब तक यावर हसन और शुभम खजूरिया द्वारा. एक बेहतर शुरुआत देने में अभी तक सक्षम ये दोनों बल्लेबाज अथवास इंडिया 11 के सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के गेंदबाजों के विरुद्ध. और बेहतरीन माइंडसेट, एक पॉजिटिव अप्रोच, वो क्षमता, वो अनुभव दिखा शुरुआत में ही इन दो बल्लेबाजों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध. आवश्यकता भी है इस प्रकार की बल्लेबाजी की. बड़े शांत स्वभाव के दोनों खिलाड़ी. जब जब अवसर मिला है तब तब उन्होंने हाथ खोले हैं. और ये अंदरूनी भाग, हालांकि भाग्य ने साथ दिया, अन्यथा स्टंप से गेंद टकराती तो परेशानी में पड़ सकते थे, पर ऐसा हुआ नहीं. सुरक्षित. ओवर की समाप्ति 3 के बाद 19. अथवास इंडिया 11 111 के जवाब में 112 चाहिए जीत के लिए. वसीम बशीर 2 ओवर 14 रन, 7 का इकॉनमी. 1 ओवर की गेंदबाजी सलमान ने, पर कोई खास प्रभाव अभी तक छोड़ नहीं पाया है बल्लेबाजों पर. जहां तक सवाल है अथवास इंडिया का, उतनी ज्यादा भारी मात्रा आज दर्शकों की है नहीं, पर ओवरऑल अगर जिक्र करें तो एंजॉय कर रहे हैं जितने भी दर्शक यहां मैदान में उपस्थित हैं बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में. जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास. 10वां मुकाबला. यावर हसन 8, शुभम खजूरिया 11. ये पहला मुकाबला शुभम का. और यहां संभवतः परिवर्तन. और ताजीम टाक जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज है, पिछले मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की थी. और इस मैच में एक बार फिर अब जाकर के चौथे ओवर में सलमान को हटा करके उनके स्थान पर अब शुभम शर्मा का इस्तेमाल किया जाएगा. और शुभम शर्मा अभ्यास कर रहे हैं गेंदबाजी में. पहली बार स्पिन आक्रमण. 1 ओवर की गेंदबाजी सलमान से, 2 ओवर की गेंदबाजी वसीम बशीर से.
तीसरे गेंदबाज का चयन और अवश्य भी है परिवर्तन किया जा रहा है। क्या यह परिवर्तन रंग लाएगा अथवा नहीं, ये देखना होगा। 19 रन बने हैं। शुभम शर्मा आज बल्ले से कुछ योगदान दे नहीं पाए, फ्लॉप रहे। पिछले 2-3 मुकाबलों से उनका प्रदर्शन बिल्कुल भी उस प्रकार का रहा नहीं और अब गेंदबाजी में अवसर मिला है तो देखना होगा क्या प्रभावित कर पाएंगे, क्या यहाँ अपनी टीम के लिए कुछ विकेट्स प्राप्त कर पाएंगे, देखना होगा। फिलहाल पहली गेंद लेकर के अच्छी गेंद थी, जगह बना करके ऑफ साइड में गेंद को खेले जरूर पर उस ओर खिलाड़ी आजिम राथेराज टीम का हिस्सा नहीं है। दानिश मुजफ्फर को बाहर रखा गया है। अलग प्रकार की मानसिकता यहाँ पर कप्तान नदीम डार की, पर चर्चित जरूर रहेंगे, चर्चा में जरूर रहेंगे और काफी लंबी टिप्पणी जरूर होगी मैच के बाद। फिलहाल ये गेंद यहां सिंगल मिलेगा। देखिए आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, किसी भी हड़बड़ाहट का सामना नहीं कर रहे हैं, जानते हैं किस प्रकार से यहां बल्लेबाजी करनी है। स्पिन गेंदबाजों के विरुद्ध यावर हसन 8 पे, शुभम खजूरिया 12, 20 रन बने हैं। चौथे ओवर की गेंदबाजी और पहले विकेट की तलाश यहां पे टीम सुल्तान वॉरियर्स को। क्या एक ब्रेक थ्रू दिला पाएंगे यहां शुभम शर्मा? काफी आलोचनाओं में रहे हैं, चर्चित रहे हैं क्योंकि उनका खास प्रदर्शन रहा नहीं अब तक। फुल लेंथ की गेंद ऑन साइड में, शुभम शर्मा अब तक 1 रन उन्हें दिया है। यावर हसन 8 पे, कमाल के ये खिलाड़ी जब जब अवसर मिला है, जब जब परिस्थितियों में उन्हें अपने आप को साबित करने का अवसर मिला है, उन्होंने किया है वो बड़े स्तर पे भी और इन मुकाबलों में भी। इस प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा है। पर सुल्तान की टीम को एक विकेट की तलाश, जल्द से जल्द वो सफलता की तलाश में, और देखना होगा यहां से उस तलाश को पूरा कर पाती है टीम अथवा नहीं शुभम शर्मा द्वारा। ये गैप में गई है गेंद और एक बार फिर ये चौका मिलता हुआ यहां पर यावर हसन को। हालांकि उस ओर खिलाड़ी तैनात थे शुभम शर्मा जो कि पहला ओवर कर रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक था और वहां पर फील्डर जरूर पर उनसे गेंद रोकी नहीं और गेंद सीमा रेखा से बाहर। ये चौका मिलता हुआ 112 चाहिए जीत के लिए और यहां कुल रन संख्या 4 के बाद 25। ओवर की समाप्ति 4 समाप्त 25 बगैर नुकसान के। Tazim, ball bounced all of a sudden in front of Tazim there, and it looks like that Tazim is warming up. No, they're going to go back to the pace again. Salman will continue. He's got the ball in his hand now. Now the end change it. What he's going to bring in from this end, is he going to steam in? Will he find that energy, the pace? He will operate from Southern Pavilion out, the block 5, amenity block 5. From this end and angle, find it out. What will he do? Salman continues to operate. Salman, look at that shot. So nice once again. That elbow 90 degree. The shape, the posture. Held his head high, locked his head. Very watchful again. Kanaya checking Yawar Hassan's bat. It's something special. It must be. Everyone is checking that bat time and again. What he has brought in today's game. Salman is a young lad, energetic lad. He's gonna grow with the time. He's a grown up now, but he will learn more basics with the passage of time.
He will adapt those skills and will come up with fiery spells. He's bowling well at the moment. Guided nicely. Unable to find the gap. Would have been a great shot. Would have been a boundary. That was still a great shot. But he found the man there. It's 26 without loss. We're into the 5th over. It should be more than that. I think 27 now. There is addition in form of that single. Yavar Hassan 14, Shubham Khajuria 13. And looking at the two batters in the middle, they're batting with freedom, they're batting with ease. They're middling the ball, finding singles at will. And they do enjoy with the bat at the moment. They don't need to overhit and to be over smart. As they know, 112 is easy to get. It's gettable, it's chaseable. And Sultans with 2 games to go in the tournament. They have to win both the games. The net run rate that came into play yesterday, but their net run rate wasn't better from other side. So they're going to find a way. And they already found that way yesterday. How to get knocked out of an event. And today, they're on verge of losing the second game. It will be a bit early to say that they will lose. But that remains to be seen. What they're going to do. As they are on verge. Looking at the Athwas India 11, they don't have too much to chase in today's game. Should be paltry one. It is a paltry score on the board. And he has overstepped here. Balwinder Kumar Soni. Is he going to check first or is it given a no ball? Is he going to ask the TV umpire? No, he signaled a no ball. It's going to be a free hit coming up. He's got the Hawkeye. He's got the vigil. The eyesight is perfect when it comes to the Balwinder Kumar. Free hit. That's a big shot. Rock back and it flies. Biggie and biggest on that portion. Amenity block 4. And that has been the heavy traffic zone in today's game. We're seeing a couple of sixes going that way in inning number 1. And here comes first one of inning number 2 in that portion. That is a biggie. Free hit ball. Goes deep in crease. Little shuffle across. Then pulled it to perfection. Heaved. And it's gone behind that amenity block 4 hoarding. And with that 6, it's 35 for none after 5 overs. They're going 7 and over. They required it just 5.13. अच्छी शुरुआत बिना विकेट खोए अथवास इंडिया 11. सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के विरुद्ध 35 5 ओवर में. सलमान 2 ओवर 15 रन. अभी तक किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला है, चाहे वो शुभम शर्मा हो, सलमान या फिर अन्य गेंदबाज का चयन किया गया था. तो अभी तक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है. शुभम खजूरिया 19 पे 17 गेंदों से और यावर हसन 15 पे 14 गेंदों से 5.13 रिक्वायर्ड रन रेट. पहला पावर प्ले 5 ओवर में 35 रन बना लिया है यहाँ टीम ने. जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और जेके स्पोर्ट्स टाइम यूट्यूब के अलावा रेड एफएम जेके के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है 10वें मुकाबले का. और बेहतर स्थिति में, एक बेहतर पोजीशन में यहाँ टीम अथवास इंडिया 11, क्योंकि वो पहले विकेट के लिए जूझ रही है टीम सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला, पर अभी तक वो हाथ नहीं लगी है वो पहले विकेट. और अब जाकर के ताजीम टाक का इस्तेमाल किया जा रहा है. पहली बार एक अच्छे गेंदबाज, अच्छा खासा प्रभावित किया था पिछले मुकाबले में. पर यहाँ किस प्रकार से वो प्रदर्शन कर पाएंगे ये देखना होगा. सीधे फील्डर के पास पहली गेंद पर रन नहीं मिला. यावर हसन 15 पे, एक बेहतरीन खिलाड़ी. पर ताजीम के विरुद्ध किस प्रकार से बल्लेबाजी कर पाएंगे. इस बार हवा में गेंद और यहाँ पर बाउंड्री लाइन से बाहर. 4 रनों का निर्णय आता हुआ, एक और चौका मिलता हुआ 4 और खाते में. ताजीम टाक के विरुद्ध ये चौका. आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्लेबाज यावर हसन को. और यावर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं. एकदम वहां पर गेंद की लाइन में आकर के खूबसूरती के साथ ये स्ट्रोक पिक किया और 4 रन बटोरे अपने लिए और अपनी टीम के लिए. 39 छठे ओवर में इस बार सम्मान दिया.
सामने की ओर खेल करके 1 रन पूरा कर लिया। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र से गेंद को फील्ड करके आसिम बशीर गेंद को थ्रो करते, पर समय था पर्याप्त दोनों बल्लेबाजों के पास एक और रन बटोरने का। 6वां ओवर। अभी तक वो पहले विकेट की तलाश यहां पे सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के गेंदबाजों को। ताजीम का ये पहला ओवर है। ये परिवर्तन किया जरूर है, पर यह परिवर्तन अभी तक रंग नहीं ला पाया है जहां तक विकेट्स का सवाल है। 5 रन जरूर खर्चे हैं ताजीम ने। अच्छे गेंदबाज हैं, पर दबाव में जरूर होंगे क्योंकि शुभम खजूरिया और यावर हसन बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बेहतरीन मानसिकता के साथ उन्होंने अब तक बल्लेबाजी की है। 5.5 के बाद अंतिम गेंद का आना बाकी। अब तक अच्छा ओवर कटा है, 1 चौका 1 सिंगल आया इस ओवर में 5 गेंदों से। और ताजीम को पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है। देखिए विकेट टू विकेट गेंदबाजी की है, ज्यादा अवसर दिए नहीं है। आखिरी गेंद पर रन नहीं आया। ओवर समाप्त, 6 समाप्त, 6 के बाद 40। अथवास इंडिया 11 बगैर नुकसान के। Huge difference between Sultan Warriors and Athwas India 11. First 6 overs yielded in block. In inning number 1, in inning number 2, it's a steady start. Shade over on a ball. Athwas India 11 with all the wickets in kitty in hand. All 10. Most of them can rock the field with some of the big shots, and Shubham Singh Pundir. That's going to be another player to watch out. Some of the cracking shots he displayed the night here. I don't think these two lads will keep it for the middle and down the other batters to come in and chase it. It looks like that these two will try to chase it with ease. They will fancy their chances. And against the likes of Tehzeeb, that pull shot of the bat of Yavar Hassan, showing that intent and telling everyone that we are here to finish the game. We won't take it for granted, as cricket can change its colors. Now Shubham Sharma, he need to do something special with the ball, as he failed with the bat badly once again. Singles are gonna come at ease. And they know how to rotate. Rotation is important, and they're doing that in style, in some style. There is no dot ball pressure at all. So when runs are coming with just 112 to get, this will keep them on track. Enjoying, look, runs are coming, flowing at the moment. They're not going for big boundaries. They're not going for boundaries and sixes. They're just trying to keep it simple and tight. Playing round a ball here. Now Yavar is going to look for a boundary here. It looks like that. He's in search of a boundary. Taking a quick look of the field on either side. And takes a look in offside also. Looking at offside. Looked on onside earlier on. It means whenever there is a half tracker, he's going to adjust. He will try to pounce the two boundary riders. There, one is at mid-wicket, one is at square leg, and he's got a man at long on. So he got 3 boundary riders on onside. It's a vast field. Defensive again. Good running between the wickets. Not trying to overhit. And keeping that cool head. Continuing with that composure. Consistency matters. He has been consistent. Thank you, Tajamul sir. Thank you very much. The owner of Murad Cricket Club. Thanks a lot, buddy. It's been a wonderful year, eventful and a fruitful year for Murad Cricket Club. That one, there is a shot for LBW and a stand down. No problem at all. And it's lucky that he gets away with that one. Shubham Khajuria. And hoping for the best from Tajamul, sir, if he is here today. And there is going to be something special on offer. Thank you very much. Back to the business. 43 for none. Talking about the game of cricket as it is going on between Athwas and Sultan Warriors. Look at that cover draw again. That's the beauty of Shubham Khajuria. Tehzeeb can't prevent that one, can't stop the ball. And Shubham Sharma telling Tehzeeb, what happened to you? And he says, how can
I stopped that one. There was execution, that there was placement, there was footwork. Take a look again. Wow, glorious and gorgeous. Lovely timing, fair and lovely, handsome of the bat of Shubham Khajuria. Well, Tehzeem, it's the second time when he misread it. The ones we saw on the offside from this portion, it was a bowler, I think, Shubham Sharma. Oh, it was again Shubham. That over he bowled from Amenity Block 2, and that is the Northern Pavilion, and this time he was operating from Southern Pavilion end, and he lost the control of the ball, unable to stop the ball. But that was brilliant shot. That was cover drive. Twice. One from when he was bowling from Northern Pavilion end, the next one from Southern Pavilion end. Two cover drives. Both were copybook. Both were stylish. And I call it pristine class and beauty. 47 for none. 8th over. Tehzeem in his second over. Yawar presented the bat face. Bat is right there to block it away. Partnership is taking game away. The captain is yet to understand. He's feeling that pressure at the moment, looking speechless, lip locked for a while, as there is nothing going his way and his team's way. And they are struggling badly. Lost that momentum in the middle overs. They were bundled out. They lost 7 wickets in space of 11 or 12 runs. 11, 12 or 13 around that. Losing 7 of the batters. That you call the collapse. It was miserable. It was a kind of headache. Sad moments. And it was agony too. And that agony compounded when they finished on 111, giving their opponent side 112 to chase, setting a paltry total. One share of Team 50, Athwas India 11, bringing in that variety, talent, composure, class, resilience, perseverance, bowlers, batters, pacers, spinners. Barring that one, they lost that night. They have been really well and best in the business. The first game, that was a nightmare for Athwas India 11. The inaugural game, they were defeated, they were down and out. The only team which has shown that grit and that consistency, the commitment towards the team, the dedication, the determination, that is the Royal Goodwill. They're enjoying their royal ride. And Sultan Warriors Baramulla, they need to think over it again and again. Homework needs to be done. They have to go through a lot of tough times now. Lot needs to be done. The damage that is being done by the yesterday game, that has been done already by the yesterday game, and this one is going to again compound the damage. This is going to multiply that. And now they need to repair it in the remaining 2 games. Captain goes to Asim, asking him, provide us something here. Another change in the department. What can Asim do now? Some of the quality bowlers, they failed to deliver what was expected, and there were huge expectations. And captain giving ball to Salman and others. Salman is the prime pacer, and he's the one who was leading that pace battery up front. He's the spearhead. Nadeem can also bowl. He can bowl those cutters, the slower ones, very effective at times, has been efficient with the ball, and that efficacy, talking of the bowler Nadeem, but he has been an X factor. Asim with those flighted ones won't be too much effective against the likes of batters like Yawar and Shubham Khajuria. And look at bowler, he isn't happy at all. Look at his reaction and response. He isn't happy at all, and Asim has lost his control. He's showing that anger, anguish.
over that one, but look at that shot, stand and deliver. No problem at all. Good fielder on the field, lost the control over the ball, Umesh. But this time he's there to protect it, savor that one, keeps it down to 1. Umesh, he was surprised with that low full toss by Umar Nazir earlier on today. 50 up, it's 53 for none. Now he decided, as it flies, goes the distance. It's come up the bat of Yawar Hassan. Yawar says, I'm gonna take it. Take a look, their dugout. There are going to be happy faces in today's game. Yawar has got a brilliant bat in his hand. There is something special in this one. He's got one special piece in his hand when it comes to that bat in his hand. It's a special one. It has got a good stroke. 11 of 3 balls, 29 of 24. That one, it's aerial, it's upish. Where is this one going? It dropped short of Umesh Setu there. Umesh is the safest fielder on the field. Although he lost control earlier on, but he's still a good fielder. He has that ability to be at his very own best, driven straight. They won't take any undue risk. They know their responsibility. Why they take risk? They know very well how it happened for Sultans, how it unfolded, how it gone from bad to worse in inning number 1. 62 for none. Solid, cool, calm. Right on top, over comes to an end. 9 gone, 63 for none. We saw the opening stand of 100 and more than that yesterday between Tajamul Baba and Hinan Malik. Can they break that or can they level that? They're chasing 112. Can't level that, but they can come up with that 100 and stand. They can share that kind of partnership of 100, and that's going to be the second 100 partnership stand between the two openers. The one we saw yesterday, take a look. This is Banai Mazboot Kashmir, Build Strong Kashmir with JK Super Cement. And they are the partners. They are the part and parcel of event Red Premier League Season 2, presented by Athwas. And the name Athwas India 11. It means go hand in hand, hold hands together, let's walk together towards prosperity, prosperous Kashmir, strong and stronger Kashmir. 63 for none. Tazim is given the ball again, and change of voices in the com box. 63 ओवर में 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से जूझ रहे हैं एक विकेट के लिए। अब सूखा पड़ा हुआ है यहाँ विकेट्स का। अभी तक पहले विकेट की तलाश सुल्तान की टीम को। एक बार फिर 1 रन और मिल जाएगा यावर हसन और शुभम खजूरिया। बेहतरीन बल्लेबाजी शुभम खजूरिया और यावर हसन द्वारा। 64 9.1 के बाद 31 पे शुभम खजूरिया, 32 पे यावर हसन और ताजीम का ये तीसरा ओवर। अनुशासन जरूर, पैनापन जरूर और किफायतीपन जरूर, पर विकेट नहीं मिला है। 2.1 में 8 रन मात्र दिए हैं ताजीम टाक ने। पहले विकेट की तलाश सुल्तान की टीम को अथवास इंडिया के विरुद्ध, पर वो सफलता अभी तक मिली नहीं है जिसकी वो तलाश शुरुआत से कर रहे हैं। और लक्ष्य भी उतना बड़ा नहीं है, धीरे धीरे से उस लक्ष्य के नजदीक पहुंच रही है अथवास की टीम। पैड पे टकराई, अपील हुई हल्की सी, पर अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, दौड़ करके रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और खाते में समझते शुभम खजूरिया, यावर हसन लेग बाई के रूप में वो सिंगल। 10वें ओवर की गेंदबाजी, अब तक सफलता नहीं मिली है। और इस मैच में अगर हम देखें, एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप तजमुल बाबा और हिनान मलिक ने निभाई द रियल सुल्तान समर बुक के लिए।
और बिना कोई विकेट खोए वो 112 संभवतः चेज किया था अथवा 119 121 चेज किया था रियल सुल्तान समरबुक ने बिना कोई विकेट खोया। तो जमल बाबा ने आतशी पारी खेली थी और हिनान ने भी बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी, तो वो एक रिकॉर्ड है पहले विकेट के लिए। नाबाद वो 125 की साझेदारी 66 अथवास इंडिया 11 ताजीम शुभम खजूर। देखिए मानसिकता इस बल्लेबाज की बिल्कुल भी किसी जल्दबाजी में नहीं है, शानदार तरीके से सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट किया है, वहीं पास में खेल करके रन पूरा किया है, परिस्थितियों के अनुकूल बल्लेबाजी की है और बेहतरीन प्रदर्शन किया है दोनों बल्लेबाजों ने। जहां तक इस प्रारंभिक जोड़ी का सवाल है अथवास इंडिया 11 की 33 यावर हसन 32 शुभम खुजूरिया 7-7 दोनों बल्लेबाज। जहां तक उनकी व्यक्तिगत रन संख्या का सवाल है और कुल रन संख्या 67 10वें ओवर में बगैर नुकसान के। ताजीम का तीसरा ओवर, एक विकेट चाहिए, एक स्लिप तैनात है, खूबसूरती के साथ गेंद के पिच तक पहुंचे, रक्षात्मक रूप से खेला बगैर किसी रन के। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 67 अंतिम गेंद खाना बाकी। पहले सत्र के इस 10 ओवर की ड्राइव किया, गेंद के पिच तक पहुंचते लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को आकर के गेंद को फील्ड करना पड़ा। सिंगल मिल जाएगा अंतिम गेंद पर। सिंगल ओवर की समाप्ति 10 समाप्त 68 बगैर नुकसान के। 60 गेंदें 44 चाहिए जीत के लिए और मुश्किल परिस्थितियां जरूर हैं सुल्तान के लिए। अलग प्रकार का माइंडसेट दिखा है कप्तान नदीम डार का। प्रदर्शन पिछले 2-4 मुकाबलों में रहा नहीं उनका, और पिछले मुकाबले की बात करें वहां पर कुछ रन जरूर बनाए थे, एक छोटी पारी जरूर खेली थी, वो एग्रेशन नहीं दिखाया बीच फील्ड में। अगर मैदान की हम बात करें, आजिम रथ टीम से बाहर है, दानिश मुजफ्फर जैसे खिलाड़ी को बाहर रखा गया है, एक अलग प्रकार का माइंडसेट लेकर के। और मैं समझता हूँ ये चर्चा रहनी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा आलोचनाएं होनी चाहिए मैनेजमेंट की अगर हम बात करें इस प्लेइंग 11 को लेकर के, क्योंकि हाल फिलहाल का प्रदर्शन पिछले 2-3 मुकाबले उस प्रकार के रहे नहीं है, उस प्रकार का प्रदर्शन रहा नहीं है सुल्तान का। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सोच विचार करने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है। पर इस समय 60 के 244 बहुत बेहतर क्रिकेट खेली है अथवास इंडिया की टीम ने। साठ से 44 एकतरफा मुकाबला बना दिया है। पहला 10 ओवर का सत्र कुल मिलाकर पूरी तरह से नाम रहा अथवास इंडिया के लिए। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग 2025 सेकंड एडिशन प्रेजेंटेड बाय अथवास बख्शी स्टेडियम। 10वां मुकाबला, और इस मुकाबले की समाप्ति के बाद 3 बजे एक और मुकाबला खेला जाएगा और फिर दिन रात्रि के मुकाबले में आपके साथ एक बार फिर जुड़ेंगे। तो 3 मुकाबले आज खेले जाने। इस पहले मुकाबले में आज के दिन की अगर हम बात करें, सुल्तान की टीम पर पूरी तरह से दबाव और हावी बल्लेबाजी शुभम खजूरिया और यावर हसन ने एंजॉय किया आज अपनी बैटिंग को। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की है, निडर होकर के क्रिकेट के लिए, आत्मविश्वास के साथ, शांत स्वभाव के दोनों खिलाड़ी। जब आवश्यकता पड़ी तब बड़े स्ट्रोक खेले और सिंगल डबल से भी स्ट्राइक को रोटेट किया है। एक बेहतरीन पारी खेली है, किसी हड़बड़ाहट में नहीं दिखे हैं, किसी जल्दबाजी में, और शॉट सिलेक्शन बहुत बढ़िया रहा दोनों बल्लेबाजों का। स्ट्रैटेजिक टाइम आउट के बाद अब अगले सत्र में सुल्तान की पहली पारी 10 ओवर में, अगर पहले 10 ओवर की बात करें तो लगभग 80-85 रन जोड़ लिए थे, मात्र 2 विकेट खोए थे। 98 पे 3 विकेट थे और फिर वहां से करवट बदले और कहानी में ट्विस्ट वहां से आया। और जब 111 तक पहुंचते पहुंचते टीम ऑल आउट हो गई, यानी कि वो अगले 7 विकेट कब लपक लिए गेंदबाज ने पता नहीं चला। पूरी तरह से सुल्तान की टीम वहां ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और 111 तक सीमित रही, और वो भी 17वें ओवर में। 112 का न्योता मिला है जीत के लिए। 68 बने हैं 10 ओवर में और बिना कोई विकेट खोए 4.40 रिक्वायर्ड रन रेट। अगला सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, क्या कुछ होने वाला है बताने के लिए कमेंट्री में परिवर्तन, आगे का विवरण। मनोवर।
Tanveer. "44 runs away from 10 overs. 68 it is after the completion of 10 overs. Ravi Kumar Chaurasia is here in the com box. One of the umpire of tournament. Here comes our Mr. Perfectionist when it comes to the designing those fixtures, and he knows how to design the pattern. It's 44 away from 60 balls. Yabar Hassan 34, Shubham Khajuria 32. As we watch Shubham Sharma again. He failed on the trot. That's a good shot, straight down the ground, down to where it's long off. Will just be one. 69 for none. We are into the 11th over. The final passage. From 11 to 20, we're going to find out which one will prevail. We're going to find out the winner of this one. We have two more games coming up, lined up for today. Check it, shot in the end. Guided in the end, keeps it away to offside. $69 for none. 69 for none. We are into the 11th over as we watch Shubham again. Man at mid on, man at a catching mid off, but a catching cover, I can say. And there is a possibility of a single. One more run taken. And it's 69. It's 70 from 69 to 70 now. There is addition to the tally, a single coming. They are chasing 112 from their allotted overs. Shubham, he's look off color, unable to find a breakthrough, but wide of the man there. This is JK Super Cement, a Red Premier League presented by Athwas. Sultans lost yesterday against Royal Goodwill, and today they're on verge. They're going to concede one more defeat here, and they have to come back strongly in the remaining two games. They need a stronger comeback. And dropping Danish Muzaffar and Azim Rathar, the one that Danish Muzaffar, the proper middle order batter, Mr. Dependable in the middle, he was dropped for Shubham Sharma or someone else. I don't think that's a good move. Dropping Danish Muzaffar and giving priority to Shubham Sharma. It is better to go with Danish Muzaffar. Look at Shubham and Yabar Hassan. The posture, the style, elegance, balance, sheer class and balance is there. They're middling the ball. And whatever these two are touching today, turning it into gold. That's the beauty of Yabar Hassan and Shubham Khajuria. They want to finish the game. They want to walk away unhurt. They don't want any sort of trouble while chasing paltry 112. This broadcast is coming your way on JK Sports Time Facebook, JK Sports Time YouTube. Those who are new, you can subscribe and press the bell icon, and Red FM JK YouTube channel is keeping you updated with every fixture, with all the assignments of the tournament. It's a try-on for today. We have three games lined up. The one is underway. The second one is going to come your way in the afternoon. And the third one in the evening. That's going to go a long way into the night. That will continue till late night. Straight to backward a point. There is a fumble, but they won't cash on. 40 away from 54 balls. Down to 53 now. Tazim will finish his quota. He's wicketless.
Putting brakes on, he has dried up boundaries. If he picks up one here, that will make his work handy and handful. 39 needed from 52. Good attendance once again. Amenity block 4 and amenity block 3. Amenity block 3 area is filled. That's packed. And it's hot and humid once again here. Temperature, it's 27 degrees right now. Both heading towards their respective and individual 50s. Will they get there? Are they going to bring up their half centuries in today's game? And which one will achieve it first? That's going to be another important thing that remains to be seen. Which one will bring up the 50 first? One is 13 away, the other one is 14 away. Yawar has shown those applications, that grit, even in that game where they were bundled out against the likes of Royal Goodwill. He was the lone man who stood tall. Something special is there in this guy. Yawar Hassan, coming from South Kashmir. Playing for state side is never easy. It isn't everyone's cup of tea. There must be something special to find a place to fit in. Sent back, no problem at all. They don't want to risk the wickets here. They're putting premium. They are 36 behind from 8 overs. It's 76 for none. You're watching GK Sports Time Facebook, moreover GK Sports Time YouTube and Red FM JK. Match number 10, match number 11 and 12 coming up. Coming up next this afternoon and till late night, we have 2 more games to come. And at the end of the day, it's going to be, we will come through 12 games of the tournament. We will complete the 12th one this evening. Tonight. Global Judo Titans taking on United Imports. It's going to be 2 p.m. Then we have Spectrum Kings taking on Sopor Stallions. That is scheduled for 6 p.m. And join us for that game too this afternoon. That's also good, but the third one is going to be special. They're going to be some of the big names playing for Sopor Stallions. Some of the big guns are expected to take part and participate. 76 for none after 12 overs. Captain is going to try his luck here. First one, it was ordinary one. Easy for batter to keep it away. 76 without loss. They are chasing 112, 36 behind. Look at that shot. The punch comes into play, going on to the back foot with that high elbow, so strong there. And talking about the other thing, that transfer of weight, balance, that's also important. That's in the air, that's aerial, and is put down. How come you win a match? He dropped that one, getting in possession. Then let it go, it popped out in the end. Should have been taken. I think it's Setu there. He's a good fielder. He lost control over the ball. He dropped. Should have been taken, at least something to cheer. There is nothing to cheer, nothing to celebrate as he's put down. Oh, that kept low. That stays low. Shubham Kajuria. Provoked to have a press on that. It did imbalance him a bit. It's an easy to pick. But that's a good shot again. With the flow. 78 for the loss of no wicket. In comfortable position.
on top at the moment. And that is aerial. That's gone all the way. Come back. Rock back. And there it goes. The distance. It's into the amenity block 4. And it's a 6 more. 28 more runs needed from remaining balls. I think it's 49 balls. We'll have to wait and watch. Or is it going to be 37 balls? Only that time will tell us. Wait a while. Or 41. Or 43 or 37. I think it's going to be. Take a look again. Oh, look at that shot. Brilliant. And brilliance. That was easy chance which gone down. Going through that shot again and again. And he's gone again here. What's going on? We lost that sight for a while. I think 2 sixes coming in that over. Is it? Yeah, 2 sixes coming. And we lost the sight for a while. It was all about just like that replay going on. Replays were being played. It's 28 needed from 42 now. 2 sixes at the end. Coming up the bat of Shubham and Yavar. Yavar on 45 now. Just 5 away. And Shubham is still 13 away. Look at their style and the stroke play. That's of quality. That's of highest quality. There is quality. There is resilience. There is talent. There is class. There is brilliance. Everything is in one place, in store. Some of the quality shots we come across since ball 1 inning number 2. Look, this one is going to beat the man. It does. That's straight hit comes into play. That's 4 again. Driven straight. And with that boundary, it's just 24 needed now. Bowler spec drive. Spectacular one. Into the side screen for 4. Yavar and Shubham made it look easy. It's 88. That one, it's upish. It's aerial. Who's going to take this? Oh, this time he's taken. This time he's taken. It's Azim Rath completes catch. And Shubham is gone on 41 of 45. Finally, something to cheer. That's going to be the only positive for the bowler to take away from this one. Otherwise, they were outplayed, outclassed in all the departments. In match 2, yesterday that was some fight. But today, it was simply one-sided affair. And they're still 24 behind. But till now, it was dominance. And it was dominated by Athwas India 11. They were predominant. They dominated. Calling the shots, dictating terms. On top on cloud 9, they have their tails literally up. 24 away from 39 balls. Yavar Hassan is still there and Qazi Junaid comes out to bat. He walks in at number 3. And if you remember, he put down Asim Bashir. And after that, Asim cashed on, scoring 55 invaluable runs. And later on, he was given out LBW of the bowling of Qazi. It was Tawfiq Azad who removed Asim Bashir. 24 needed from 39 balls. Good initiative. A kind of atmosphere the local players are going through. And these boys from basic level cricket sharing dressing room with the local stars who have their fan base, who have more fan base than those who have represented state who played the basic level cricket. But there is a huge difference in technique and temperament. Qazi is off the mark straight away. 23 to get. Is it so too? 23 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए.
38 गेंदें अभी भी शेष हैं इस मैच में। काजी जुनैद ने खाता खोल लिया 1 पे, मात्र 1 विकेट अंततः हाथ लगा। यावर हसन 45 पे 5 रन दूर अपने अर्धशतक से। अच्छी बल्लेबाजी की है शुभम खजूरिया और यावर हसन ने। इस पर सम्मान दिया, स्टंप्स पे आ रही थी गेंद, मिडिल स्टंप पे बैट और पैड मिला करके रक्षात्मक रूप से खेला। जानते हैं यहाँ कोई हड़बड़ाहट की स्थिति नहीं है, आत्मविश्वास दिखा, कला का बेहतर प्रयोग किया। टैलेंटेड खिलाड़ी, आसान रहता नहीं है जब आप इतने अनुभवी खिलाड़ियों के सामने बल्लेबाजी करते। ये देख लीजिए, गेंद की पिच तक पहुंचे, एक कदम आगे लेकर के बैट और पैड मिला करके कवर्स में खेला बगैर किसी रन के। ओवर की समाप्ति 14 समाप्त, 89 पे 1। अथवास इंडिया 11। 6 ओवर में 23 रन चाहिए, 36 गेंदे 23 रनों की आवश्यकता है। एक तरफा मुकाबला बना दिया अथवास इंडिया 11 ने, क्योंकि उतना बड़ा लक्ष्य वेदना था नहीं, मात्र 112 तक पहुंचना था। तो अच्छी बल्लेबाजी, 23 की आवश्यकता, 36 गेंदों का आना बाकी। शुभम शर्मा 4 ओवर 22 रन 1 विकेट। अनुशासन जरूर दिखाया, अच्छी गेंदबाजी जरूर की, थोड़ा किफायतीपन भी दिखा, पर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए, क्योंकि जब छोटे लक्ष्य होते हैं तो फिर आपको और भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने की आवश्यकता रहती है। नदीम डार 1 ओवर 8 रन। आज बल्ले से खास योगदान नहीं दिया, अब गेंदबाजी में 1 ओवर की गेंदबाजी कर चुके, दूसरा ओवर लेकर के तैयार। 15वां ओवर पारी का, कि यहाँ कोई विकेट तलाश पाएंगे। नीचे रही गेंद ऑफ मिडल पे खेला जरूर, हालांकि मिड ऑन पे खिलाड़ी तैनात है, जब तक वे गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, पर वहां अवसर नहीं मिला बल्लेबाजों को रन बटोरने का। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, मिस फील्ड और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक था, सही प्लेसमेंट जरूर थी, टाइमिंग के साथ खेला हुआ ये स्ट्रोक। नदीम डार के विरुद्ध 4 रन और बटोरे काजी जुनैद ने, और प्रयास था पर असफल, और चौका मिलता हुआ यहां काजी जुनैद को, अथवास इंडिया 11 को। और पैड पे टकराई, अपील, 1 रन पूरा किया, पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं। जब तक लॉन्ग स्टॉप से गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था 2 रन लेने का। रन संख्या में वृद्धि, 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंच गई है 95, 1 विकेट पे। काजी जुनैद 7, यावर हसन 45, 39 गेंदों से क्या पारी खेली है, और वो ठोस शुरुआत दी शुभम खजूरिया और उनके साथ यावर हसन ने अपनी टीम को एक मजबूत आधारशिला प्रदान की। बड़ी सहजता के साथ, मानसिकता देखिए, वहीं पास में खेल करके रन बटोर रहे हैं। और जब आप सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करते हैं तो फिर अपोजिट टीम पे दबाव आ जाता है, फील्डर्स पे दबाव आ जाता है, और वो चीज़ की है यहाँ पर इन बल्लेबाजों ने। मात्र 16 रन दूर हैं 32 गेंदों से, 96, 1 विकेट के नुकसान पे। 16 रन चाहिए मात्र। और अथवास इंडिया का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है इस टूर्नामेंट में। गुडविल से हारे जरूर, पर उसके बाद स्पेक्ट्रम से जीत अर्जित की, सुल्तान को बुरी तरह से हराया। यहाँ पर बिल्कुल हार की कगार पे सुल्तान की टीम। और अगर जिक्र करें नदीम डार का, तो नदीम डार का भी आज उस प्रकार का प्रदर्शन रहा नहीं, क्योंकि बल्ले से खास योगदान दिया नहीं। गेंदबाजी में 1.5 ओवर में 15 रन खर्चे, कोई दबाव दिखा नहीं उनकी गेंदबाजी में, वो पैनापन, वो अनुशासन नहीं दिखा, वो खास प्रभाव नहीं कर पाए विपक्ष के बल्लेबाजों पर। 2 में 15 खर्चे, 7.5 उनका इकोनॉमी रहा। 15 समाप्त, 96 पे 1। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के विरुद्ध अथवास इंडिया 11 10वें मुकाबले में जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग 2025 सेकंड एडिशन प्रेजेंटेड बाय अथवास। अंतिम क्षण है इस दूसरी पारी के, 5 ओवर का खेल और मात्र 16 रन दूर जीत से एक तरफा मुकाबला। गेंद आसिम बशीर के पास, हालांकि इससे पूर्व उन्होंने 1 ओवर की गेंदबाजी सबब की है। और यहां से देखना होगा अब कितना समय और लेती है ये टीम इस मुकाबले को समाप्त करने में, इस रनचेज को पूरा करने में। अच्छा क्रिकेट देखने को मिला है, अच्छी खासी धूप, 28-29 के आसपास तापमान। 10वां मुकाबला, इसके बाद अगला मुकाबला
ग्लोबल डडू टाइटंस का होना है। यूनाइटेड इंपोर्ट्स के साथ एक और बड़ा मुकाबला लेकर के आप तक पहुंचेंगे 2:30 बजे। फिर शाम के 6 बजे सोपोर स्टालियंस क्रिकेट क्लब का मुकाबला स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब के साथ। 30 गेंदों से 16 की आवश्यकता। बड़ी सहजता के साथ काजी जुनैद ने वापस गेंद को बल्ले से टकराने पर दिया, बॉलर की दिशा में चलेगी, फील्ड हुई, रन नहीं मिला। आसिम बशीर के विरुद्ध एक सिंगल यहां पर मिलता हुआ। 28 से 15 चाहिए मैच जीतने के लिए टीम को। 97 पे 1। 16वां ओवर। अथवास का ये तीसरा मुकाबला और तीसरे मुकाबले में दूसरी जीत अर्जित करने की बिल्कुल कगार पे। 4 अंक हो जाएंगे क्योंकि एक मुकाबला वे जीत चुके हैं इससे पूर्व स्पेक्ट्रम किंग से, और दूसरे मुकाबले में सुल्तान के सामने रॉयल गुडविल से हारे, और अगला मुकाबला उनका सोपोर स्टैलियन से होना है। 97 पे 1। और 27 से 15 की आवश्यकता। आसिम बशीर 15। 1.3 ओवर की गेंदबाजी में, और कोई भी गेंदबाज आज कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाया क्योंकि लक्ष्य उतना बड़ा था नहीं। सुल्तान की टीम 98 पे 3, 111 पे सिमट गई थी। वो प्रदर्शन एक बार फिर वो कहानी दर्शी, और फिर वो परंपरा दिखी अंतिम ओवर्स में जो सुल्तान के लिए जानी जाती है पिछले कुछ समय से। और हाल फिलहाल का प्रदर्शन जो है काफी खराब प्रदर्शन रहा है इस टीम का। अब काजी जुनैद और यावर हसन, 46 यावर हसन ने बनाए हैं। अच्छी बल्लेबाजी, पर एक लंबी मंत्रणा जरूर होगी और आलोचनाएं जरूर होंगी। इस मुकाबले की समाप्ति के बाद अगर सुल्तान की बल्लेबाजी की बात करें, उनके व्यवहार की बात करें, उनके गेंदबाज, ओवरऑल उनके प्रदर्शन की बात करें हाल फिलहाल को देख करके, तो कहीं ना कहीं कहाँ कमी रह गई है उसको पूरा करने की जरूरत है। गलतियों से सीख की जरूरत है। ये कोशिश जरूर होगी। फिलहाल 16 के बाद 99 पे 1। 4 ओवर में 13 चाहिए। 24 गेंदें, 13 रनों की आवश्यकता इस मैच को अपने नाम करने के लिए। यावर 46 पे, काजी जुनैद 10 पे। शानदार क्रिकेट के लिए बेहतरीन क्रिकेट एक बार फिर दर्शा दिया है अथवास के खिलाड़ियों ने कि बड़े स्तर पे खेलने के लिए निश्चित तौर पे क्षमता चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, कला चाहिए, कैलिबर चाहिए, और सबसे बड़ी चीज संयम और धैर्य चाहिए। वो कर दिखाया है एक बार फिर इन खिलाड़ियों ने। यावर 46 पे 44 गेंदों से, काजी जुनैद 10 में। 99 पे 1। 16 समाप्त। 4 ओवर का खेल। नदीम डार 2 ओवर में 15। और कमाल के विजुअल्स मैनेजमेंट के सदस्य सब होते। ये खूबसूरत, ये इस प्रतियोगिता का राज, इस सफलता का राज। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर, ऐतिहासिक मैदान। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग का दूसरा सत्र, दूसरा एडिशन खेला जा रहा है। 10वां मुकाबला। नदीम डार 1 ओवर लेकर के। 13 की आवश्यकता 24 गेंदों से। पहली गेंद पर एक सिंगल, दूसरे की मांग, और दूसरा भी पूरा कर लिया। दिशाहीन थ्रो। 2 रन और खाते में। 11 की आवश्यकता 23 गेंदों से। 11 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। 23 गेंदों का बाकी। 100 रन पूरे होते। 101 पे 1। 16.1 के बाद 101। 101 पे 1। 16.1 वापस काजी जुनैद। एक और बेहतरीन विजुअल, बेहतरीन दृश्य। ये गेस्ट गैलरी एंजॉय कर रहे हैं इस मुकाबले को। शांत धीमा क्रिकेट पर एक अच्छा क्रिकेट मुकाबला। खूबसूरती के साथ क्लाइंब के साथ दम पे ड्राइव किया। वापस नदीम डार की दिशा में बगैर किसी रन के। यहां सिंगल मिल जाएगा क्योंकि वाइडिश लॉन्ग ऑफ की ओर गेंद चली गई है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। 1 रन और खाते में। 10 चाहिए 20 गेंदों से। 16.4 के बाद 102 पे 1। यावर 46 पे 44 गेंदों से। काजी 13 पे 4 रन दूर अपने अर्धशतक से। बेहतरीन पारी यावर हसन की। इस बार उड़ा दिया और सीधे खिलाड़ी को थमा दिया। यावर की पारी हो गई समाप्त। अंततः नदीम डार को मिल गई सफलता। 102 पे दूसरा गवाया। बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे
पर ठीक तरीके से गेंद को टाइम नहीं कर पाए, पीछे खिलाड़ी थे, उनने सीधे लपक लिया। ये अच्छा कैच पकड़ा सुल्तान के इस खिलाड़ी उमैस ने। उमैस सिद्धू ने यह कैच लपका लगभग मिड विकेट के क्षेत्र में, और इस प्रकार से दूसरा विकेट। यावर 4 रनों से चूक गया अपने अर्धशतकों पर। पारी बहुत बढ़िया रही और अर्धशतक से कहीं ज्यादा महत्व इस 46 रनों की पारी का, जो शुभम खजूरिया के साथ शुरुआत में आए थे। एक ठोस शुरुआत दी थी अपनी टीम अथवास इंडिया को सुल्तान के विरुद्ध। 102 पे 2, 16.5 के बाद 19 गेंदों से 10 रनों की आवश्यकता, और अंततः नदीम ढार को एक सफलता मिल चुकी है 2.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। 18 रन उन्होंने खर्चे हैं। अब नंबर 4 पे काजी जुनैद के साथ देखना होगा किस बल्लेबाज का चयन किया गया है। नंबर 4 पे उन्नीस के 210 रनों की आवश्यकता। ऐतिहासिक बख्शी स्टेडियम श्रीनगर, जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग दूसरा एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास। ये 10 मुकाबले समाप्त होने को है इस समय, और दीक्षांत कुंडल का इस्तेमाल अब किया गया है बल्लेबाजी में। दीक्षांत कुंडल 102 पे 2, 16.5, 19 गेंदे 10 रनों की आवश्यकता। 3.16 रिक्वायर्ड रन रेट, 6.06 करंट रन रेट, और अच्छी क्रिकेट अभी तक के लिए नदीम डार के विरुद्ध दीक्षांत द्वारा। स्ट्रोक और सिंगल मिल जाएगा यहां पर दीक्षांत को। अंतिम गेंद पर रन आया, 17 समाप्त, 103 पे 2, 18 गेंदें बची हैं, 9 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। काजी जुनैद 13 पे, दीक्षांत कुंडल 1 पे। आखिरी 3 ओवर का खेल, और देखना होगा क्या इसी ओवर में इस मुकाबले को समाप्त कर देंगे काजी जुनैद और दीक्षांत कुंडल। 17 के बाद 103, 2 विकेट्स पे, 18 गेंदों से 9 की आवश्यकता। और सुल्तान पिछला मुकाबला गुडविल से हारे, दूसरा मुकाबला अब अथवास इंडिया 11 से हार के कगार पे। तो लगातार 2 मुकाबलों में 2 हार, कहीं ना कहीं सोच विचार करने की आवश्यकता है, और आगे का सफर जो है काफी मुश्किल, कठोर रास्तों से गुजरना है, कठिन परिस्थितियां आने वाले समय में इस प्रतियोगिता में सुल्तान के लिए। 103 पे 2 आसिम बशीर का इस्तेमाल। पहली गेंद ऑफ मिडल पे पड़ने के बाद नीची रहती हुई गेंद हल्के हाथों के साथ वापस खेला दीक्षांत कुंडल ने, बगैर किसी रन के अपने फॉलो थ्रू में फील्ड कर लिया। ऑफ स्टंप से बाहर गैप में निकाला है गेंद को, चौका मिल जाएगा 4 और खाते में। जैसे ही देखो ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर है, थोड़ा सा अतिरिक्त तो चाल भी है, कट किया गेंद को और 4 रन अर्जित किए दीक्षांत कुंडल ने। बेहतरीन बल्लेबाजी की है आज बल्लेबाजों ने अथवास इंडिया 11 के लिए। 5 रनों की आवश्यकता 16 गेंदों से, 107 पे 2, 112 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। गेंद की पिच तक पहुंचते हुए ड्राइव किया लॉन्ग ऑन की ओर, सिंगल मिल जाएगा। एक और खाते में जुड़ता, 4 चाहिए 15 गेंदों से, 108 पे 2, 111 रन बनाए थे सुल्तान की टीम ने। 17वें ओवर में सिमट गई थी पूरी टीम में 112 रनों का विजयी लक्ष्य 108। शुभम खजूरिया ने बेहतरीन पारी खेली, उसके अलावा काजी जुनैद इसमें 13 पे हैं, पर यावर हसन ने 46 की एक बेहतरीन पारी। 2 विकेट अब तक मिल चुके हैं, पर यहाँ 4 रन दूर हैं जीत से अथवास इंडिया की टीम। एक बार फिर लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर खेले, एक सिंगल मिला यहाँ पर, 1 रन और खाते में, 3 अब चाहिए 14 गेंदों से, 109 पे 2। बड़े आत्मविश्वास के साथ, संयम के साथ, किसी भी जल्दबाजी का शिकार नहीं हुए बल्लेबाज अथवास इंडिया के, कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखाई और बेहतर तरीके से इस रन चेज को पूरा किया और बिल्कुल कगार पे खड़े हैं। 1 रन और मिल जाएगा लॉन्ग ऑन से गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, और अब 2 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। 13 के दुकाना बाकी, 2 रन चाहिए अथवास इंडिया को। 110 2 विकेट के नुकसान पे 17.5 अंतिम गेंद का आना बाकी। काजी जुनैद 14, दीक्षांत कुंडल 7।
अच्छा स्ट्रोक, बेहतर स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी 1 रन और इस प्रकार से स्कोर बराबरी पे 111 पहली पारी में बने। ऑल आउट हुई थी सुल्तान की टीम 17वें ओवर में और यहाँ दूसरी पारी में 18 ओवर में 111 बने हैं 2 विकेट पे। 2 ओवर का खेल यानी कि 12 गेंदों से 1 रन चाहिए मैच जीतने के लिए अथवास इंडिया 11 को। Just one away. Scores are level. Nelson on the board, 112. Sultan setting 112 for Athwas India 11. What a comeback and what a victory it is going to be. And they're going to taste it. And in today's match, they were under the pump at one stage. And Sultans were 98 for 3. They were having 7 of the batters in kitty. Lost the momentum. It was a flop show from middle and down the order batters. Banu couldn't release the ball. He's going to go back to reload and re-bowl that one. He's going to bowl it again. Dead ball signaled. 1 away. Qazi Junaid on strike. They're not going to run? What's going on? There was a single pretty on. Well, what surprised me, I was looking at the batter, what he's going to do now. There was a single on, but decided against that run. Is he going to go big? Is he going to launch that shot? Now he decided to come forward. He's stumped here by Banu there. Look at the celebration. Oh, he is kissing his fingertips and thanking divine forces, looking skywards. But something is gone, is stumped by wicketkeeper Wasim Kasur there. And Qazi Junaid has no time to be back to the safety of crease. He looks back and bails were off. That brings Mudassir Abdullah in at number 5. They can't lose this one. 10 balls remaining. 1 needed. And it's the 19th over, the penultimate of the second last over underway. 10 balls, 1 to get. Banu among the wickets now. It was just his second ball where he removed the wicket. He got rid of left-hander Qazi Junaid from Gandarbal. Was trying to launch it. He was trying to finish the game. I think Dikshant given him a kind of license that you have to finish the game with a big shot. Otherwise, there was a single pretty on. They decided against that single. 1 away from 10 balls. On strike is going to be Mudassir Abdullah. And with this victory, they will have 4 points under their belt. Athwas India 11. As the name goes on, Athwas India 11. And JK Super Cement Red Premier League presented by Athwas. Together we progress, together we prosper. 1 needed from 10. Mudassir Abdullah on strike. Once again, he couldn't release the ball. He has to reload again. Dead ball signaled by Balvindra Kumar Soni there. Banu second time in this over. Something is cooking inside his body. Just want to defend. They have plenty number of balls. That's it. That's gone fine down to the backward of scare. And they win this one by 7 wickets against the likes of Sultans. We shall be back with match number 2. It's Global Dudu Titans taking on United Imports. We shall be back with that game. Till then, Assalamu alaikum and fi amanillah.